Ms. Tejaswita Karveer, Compliance Manager, UIDAI, and my colleague, Ms. Sejal Kumbare, Legal Manager. On behalf of CEO of UIDAI, Dr. Saurabh Garg, and senior officials of UIDAI, extend my warm welcome to Chief Secretary, Principal Secretary, and other senior officials from different departments of State Government of Maharashtra. Aadhaar has completed its 10 years of establishment. The agenda of this workshop is to strengthen, encourage, and enhance the Aadhaar usage in the state of Maharashtra. Aadhaar 2.0 was the preamble to conduct this state workshop. The similar workshops are being conducted across the country. It is a matter of pride that very first Aadhaar card in India was successfully issued to the resident of Nandurbar district of Maharashtra on 29 September 2010. Since then, Maharashtra is playing a pivotal role in usage and enhancement of Aadhaar by sharing the best practices of various departments of Maharashtra, such as IGR, POCRA, and FCS, which has become a benchmark for other states to adopt. We have officials to discuss on strengthening of Aadhaar ecosystem, new initiatives taken in authentication, best practices of IGR, POCRA, and FCS, DBT mission, Aadhaar usage pan-India prospects, and Aadhaar DBT analysis and enhancement prospects. I request Shri Sumnesh Joshi, DDG RO Mumbai, to facilitate CEO of UIDAI, Dr. Saurabh Garg, with a token of remembrance. I request Colonel Akshay Yadav, Director, RO Mumbai, to felicitate Shri Asim Gupta, Principal Secretary, IT, Government of Maharashtra. To give a small snapshot of vision of Aadhaar through corporate video, I request video to be played. A revolutionary step, a revolutionary decision, a revolutionary change that gave a digital identity to each and every person without any discrimination of caste, creed, class, or of being rich or poor, that empowered millions of marginalized people with a secure identity, that provided the money to the poor of which they were entitled to, scholarships to the students, and directly delivered pensions into the bank accounts of elderly persons. This is none other than the world's largest digital identity revolution. Aadhaar, my identity. UIDAI, Unique Identification Authority of India. Today, billions of residents of India are part of the world's largest digital revolution. Whereas earlier, one needed a number of cards for different tasks. Today, all identity-related work can be done with Aadhaar. Whereas earlier, the newborn didn't have any identity. Today, even a newborn can get Aadhaar. Whereas in the past, banking was almost impossible in far-flung areas. Today, doorstep banking is possible with Aadhaar-enabled payment system. Whereas earlier, it was difficult to weed out a fake or bogus beneficiary. Today, now with Aadhaar, through its biometric and demographic authentication system, this problem is almost non-existent. Whereas earlier, middlemen used to usurp benefits, now with Aadhaar payment bridge system, the cash is directly transferred into the bank accounts of beneficiaries.
Today, Aadhaar-linked services are available across thousands of bank branches, post offices, BSNL centers, and central government offices. Every day, more than 500,000 people carry out their Aadhaar enrollments and updates at these centers. These centers also carry out mandatory biometric updates of children once they reach 5 and 15 years, free of cost. Now all Aadhaar-related services are available at Aadhaar Seva Kendras run by UIDAI, which follows the model of Passport Seva Kendra. Besides this, Aadhaar has enabled authenticated transactions worth billions of rupees. Do you think all this would have happened so easily? It was not easy to implement Aadhaar in a vast country like India. The toughest challenge was to reach out to 1.3 billion people. This challenge was surmounted by active cooperation of state governments, banks, India Post, CSC, and several other partners. Aadhaar enrollment camps were set up from village to village. A robust ecosystem was created, which not only generated Aadhaar for 1.3 billion residents, but also brought in major transformation in a very short time. Now, you might say that the Aadhaar is just an ID. Okay, let's assume that it is just an ordinary ID. But do you know what all revolutionary transformations this ordinary ID has brought in? It has connected lots of people to their true identity through Aadhaar. Those who were bogus beneficiaries, today they fear the law. Those who were left behind are now being empowered. Fake beneficiaries have been identified and removed from the system. The government money that was siphoned off due to corruption has now all been saved. Those who were deprived of their rights are now enjoying their entitlements. Those who used to keep their savings safe in their kitchen or in some corners of the house now have their own bank accounts. Those who used to game the system with fake documents have been removed from the system now. Those who were lost have been reunited with their families. Questions such as to where the government money was leaking, to where the money had been siphoned off, or to whose account it has been debited are all responded to with Aadhaar. One question might have come to your mind as to what is this modern technology that Aadhaar is transforming systems so greatly and flawlessly. So, the answer is UIDAI has a very impressive, secure and state-of-the-art Central Identities Data Repository CIDR system. At every new Aadhaar enrollment, the enrollment data pack is matched with the CIDR's entire biometric database with the person's fingerprints and iris. This process is known as deduplication and is completely an automated process that determines and guarantees that an individual can have only one Aadhaar number. So, like each individual, every Aadhaar is special and unique. UIDAI's Bengaluru and Manesar centers generate 1.5 million Aadhaar cards every day. So friends, Aadhaar has not only become a revolution, but has also fostered transparency in the system. It is enabling the government to secure good governance. It is the core foundation of all government welfare schemes. It is transforming billions of lives and spreading smiles with empowerment. That is why today everyone says having Aadhaar means having trust, security, verifiable identification and ease of life. आधार अपना लो। Aadhaar, my identity. UIDAI, Unique Identification Authority of India. Thank you. Maharashtra has taken a lot of new initiatives towards achieving Aadhaar saturation in Aadhaar enrollment, update and enhancing the usage of Aadhaar authentication across the state. I request Shri Asim Gupta, Principal Secretary IT, Government of Maharashtra, to share those initiatives with us.
See, more than the initiative, we have actually identified certain fundamental issues which we must tackle. Aadhaar is now way of life. Everybody understands Aadhaar. Everybody knows Aadhaar. There are a lot of officers, however, who would like to understand the changes and why it is called 2.0 kind of a thing. So my request would be first, if we can discuss the changes, and then so that the whole idea of ecosystem actually is appreciated, and then post that I will speak about the three legs on which we want to run in a sense. So my request would be first, if you can tell about the ecosystem a little better for our officers. Thank you. Thank you, sir. Now, may I request Sumnesh sir, Deputy Director General, Regional Office, Mumbai, will brief the audience about the overview of Aadhaar. So, अगेन एक बार पुनः मैं यूआईडी और डीआईटी की तरफ से सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और स्पेशली हमारे सीईओ सर जो दिल्ली से यहाँ पे आए हैं और सभी सीनियर ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से यहाँ पर आए हैं, उन सब का तहे दिल से स्वागत। और इस कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है, इसका पृष्ठभूमि यह है कि आधार 2.0 का लास्ट ईयर जब हमने एक विज्ञान भवन में एक आयोजन किया था, और उसमें काफ़ी कुछ फीडबैक हमने इंडस्ट्री का भी और स्टेट से काफ़ी डिस्कशन हुआ था, और उसको लेके कि अगले 10 साल आधार कैसे चलेगा उसका एक रोड मैप बनाया गया। तो उसी क्रम में ये डिसाइड हुआ कि स्टेट को भी हम क्या क्या नया चीज़ हम कर रहे हैं और स्टेट कैसे आधार को यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हो। तो एक पैन इंडिया स्टेट का वर्कशॉप दिल्ली में भी किया गया, और वहाँ पे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी सीनियर ऑफिसर्स आए, और उसको देख के फिर फर्स्ट से ऐसा लगा कि हाँ ये काफ़ी यूज़फुल है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमको कंटिन्यूसली स्टेट गवर्नमेंट के साथ और यूटी के साथ शेयर करती रहनी चाहिए, और इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। तो ये डिसाइड हुआ कि हर स्टेट के अंदर हम एक वर्कशॉप करेंगे जो नोडल डिपार्टमेंट है उसके सौजन्य से। तो वंस अगेन थैंक यू असीम गुप्ता जी दैट हमने आपके साथ मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन किया, और इसके अंदर हम जो आधार में जो भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं और कैसे आधार को दूसरे डिपार्टमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और कैसे उसके बेनिफिट्स हो रहे हैं और क्या क्या चैलेंजेस उसमें हैं, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे, ताकि एक बार जब आधार के बारे में ओवरऑल पता लग जाए तो देन वन कैन इनोवेट अराउंड द डिजिटल आइडेंटिटी, जिसको कि आज की डेट में हम डिजिटल पब्लिक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं कि आधार हुआ, यूपीआई हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टर्म कॉइन की है और जिसको कि पूरा विश्व अप्रिशिएट कर रहा है। और जैसे कि शुरू में बताया गया कि जब हम ये पहले मैं आधार का ओवरव्यू भी दे दूंगा कि ओवरऑल आधार इकोसिस्टम है क्या, एंड देन डीबीटी के बारे में हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ तिवारी जी आए कैबिनेट सेक्रेटरी से, वो थोड़ा उसमें हमारे ज्ञानवर्धन करेंगे, और अमोद कुमार जी जो आधार यूजेज डिवीज़न हमारे यहाँ पे हेडक्वार्टर में देखते हैं, तो वो एक पैन इंडिया पर्सपेक्टिव उसका देंगे। तो जस्ट मे भी बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं जस्ट इन 1 और 2 मिनट्स में अगेन एक तरह से पूरी आधार है क्या, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल नए भी हैं और कुछ लोगों को पता भी होगा। तो आधार एक तरह से हम सिर्फ एक तो एनरोलमेंट की सुविधा देते हैं और एक ऑथेंटिकेशन, दो हमारे मुख्य काम हैं। एक तो ये है कि आधार नंबर इशू करना रेजिडेंट को, और दूसरा एक बार नंबर इशू हो जाए तो उसको हमको ऑथेंटिकेट उसकी आइडेंटिटी को करना है। नेक्स्ट, एंड जब एनरोलमेंट करते हैं तो वैसे सबको पता है हम सब एनरोल कर चुके हैं, तो मिनिमम डेटा हम लेते हैं, नाम, पता, एड्रेस एंड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, दी डेमोग्राफिक लेते हैं, अलॉन्ग विद फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस फोटोग्राफ हम लेंगे, और मोबाइल और ईमेल जनरली हम लोगों से बोलते हैं। शुरुआती दिनों में लोग नहीं देते थे, बट लोग अब जानते हैं कि अगर मोबाइल देंगे तो आगे आधार को यूज़ करना आसान होगा, तो ये 2 ऑप्शनल हम लेते हैं। उसके बाद ये सारा का सारा बायोमेट्रिक डेटा जब हमारे पास आता है तो 1:n डुप्लीकेशन करते हैं। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ ताकि जो भी यहाँ बैठे हैं हम फर्दर लोगों को बता पाएँ कि आज अगर हमारे 1.3 बिलियन आधार दे रखे हैं, तो अब जो नया आदमी आ रहा है उसकी 10 उंगलियां और आइरिस उन सब की बचे हुए 1.3 बिलियन की उंगलियों और आइरिस से पूरा मैच करता है सिस्टम, और जब कोई मैच नहीं मिलता है तो हम जाके उसको एक
आधार नंबर देते हैं जो कि एक नेक्स्ट जो कि एक रैंडम नंबर है, तो उससे कोई प्रोफाइलिंग वगैरह नहीं होती है। और जो आधार नंबर है वो एक एल्गोरिथम बेस्ड भी है, उसका जो ये 12 डिजिट का होता है, जो 12th डिजिट है वो चेकसम होती है। तो अगर हम किसी को बोलें कि आप एक नंबर लिख दीजिए 12 डिजिट का एक जो वैलिड आधार होगा, आप लिख नहीं सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट जस्ट टू राइट 12 डिजिट नंबर। तो जब हम आधार को यूज़ करते हैं सिस्टम के अंदर, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि एक वेयर ऑफ एल्गोरिथम जो होता है उसको ज़रूर लगाया जाए, ताकि कोई भी डेटा एंट्री एरर वहीं नहीं होती है, तो सारे के सारे करेक्ट आधार ही एंटर होते हैं। देन हम सारे रेजिडेंट को देते हैं, ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। और यूनिकनेस ऑफ कोर्स यूजिंग द बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स एंड नो गारंटी फॉर सिटीजनशिप राइट एंड एंटाइटलमेंट and security and the privacy of the information collected. So I will not discuss in detail, just some of the attributes of Aadhaar ecosystem मैं बता रहा हूँ, और उसको फिर ubiquitous online authentication हम provide करते हैं। Next. So this is the snapshot. हमारा almost आधार हम सब लोगों को दे चुके हैं, एंड थोड़े बहुत स्टेट्स के अंदर 80 to 90% ओवरऑल कवरेज है। पर अगर आप देखें कि एडल्ट का कवरेज ऑलमोस्ट 100% हो गया है, ओनली जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं और टिपिकली 0 to 5 years में ही हमारा मैक्सिमम बाकी है। तो महाराष्ट्र में भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि महाराष्ट्र में भी जो मेजर चंक है वो बच्चों का ही बाकी है, जिसके लिए हम यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, एंड दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट दैट शुरू में आप देखेंगे कि एनरोलमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे, और उसके बाद अभी नए एनरोलमेंट्स अब नहीं हो रहे हैं, और अपडेट का काफ़ी तेज़ी से मतलब संख्या बढ़ रही है, क्योंकि अपडेट इज़ मोर एंड मोर रिक्वायर्ड, जो लोगों के आधार बन गए। नेक्स्ट, एंड दिस इज़ अवर इकोसिस्टम ऑफ द आधार कि हम कैसे एनरोल करें। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आईटी रजिस्ट्रार है, WCD है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ है। In addition to these state government departments, we have the India Post Payment Bank, CSC, Gov, banks, BSNL। तो ये सब मिला के आज की डेट में 7,000 से ज़्यादा हमारी ECMP किट, जहाँ पे कि हम नया एनरोलमेंट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट भी कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स आधार के वहाँ अवेलेबल हैं इन 7,000 प्लस सेंटर्स पे। एंड इन एडिशन टू दैट 4,000 CLC किट, जो कि टैबलेट और फिंगरप्रिंट, सिंगल फिंगरप्रिंट स्कैनर को यूज़ करके चलती हैं, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक चला रहा है। तो ये घर जाके मोबाइल अपडेट भी कर सकते हैं, बच्चों का एनरोलमेंट कर सकते हैं थ्रू दिस टैबलेट बेस्ड क्लाइंट। सो दिस इज द इकोसिस्टम। तो ये सब हमारे रजिस्ट्रार हैं जिसको कि UIDAI ने एंगेज किया है, और ये सारा का सारा आधार का एनरोलमेंट का अपडेट का काम UIDAI के लिए करते हैं। नेक्स्ट 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 या so Aadhaar is nothing but a digital identity which can be authenticated online anywhere, anytime, and it can also be verified in online offline mode, that I will explain। शुरू में जो था कि ठीक है आधार दे दिया और उसका हम ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन करेंगे, पर नाउ आधार एक ऐसा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जिसको हम ऑफलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं, वो अभी सब्सिक्वेंटली मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, सो how we can use this Aadhaar for the authentication purpose। तो आप ये देख सक रहे हैं कि आधार नंबर और उसके साथ डेमोग्राफिक का सेट, नेम, जेंडर, DOB, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, या आधार नंबर के साथ बायोमेट्रिक, मे बी इट्स फिंगरप्रिंट और आइरिस और फेस, जो कि अभी हमने नया चालू किया है। तो ये ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे यहाँ 2 एट्रीब्यूट्स चाहिए। तो आधार नंबर चाहिए, या आधार नंबर की जगह वर्चुअल आईडी भी आप यूज कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल आईडी जो है एक इंटरचेंजेबल 16 डिजिट रैंडम नंबर है which is mapped with the Aadhaar number of the Aadhaar holder, and it can be generated by the Aadhaar holder any number of times, just for security reasons कि अगर कोई आधार नहीं देना चाहता ऑथेंटिकेशन के टाइम पे, तो उसका एक अलियास है वर्चुअल आईडी, वो उसको भी यूज कर सकता है। तो इधर आधार और वर्चुअल आईडी कंबाइन विद डेमोग्राफिक, सो इसको हम डेमोग्राफिक ऑथ बोलेंगे, और बायोमेट्रिक के साथ क्या उसको बायोमेट्रिक ऑथ बोलेंगे कि वही आदमी है जिसने अपना फिंगरप्रिंट दिया है, आइरिस दिया है, या उसका फेस है। एंड थर्ड इज द वन टाइम OTP पासवर्ड, कि अगर आधार में आपका मोबाइल लिंक है, तो आप जब आधार को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं और आपके लिंक्ड मोबाइल पे जो OTP जा रहा है, तो उसको अगर आप डालते हैं तो ये एक OTP वेरिफिकेशन भी है। और 2 तरह के हम इसमें आपको रेस्पॉन्स देते हैं। तो एक सर्विस है यस और नो, कि मेरे को सिर्फ यस और नो चाहिए, जो हम सबमिट कर रहे हैं, जो आदमी वो है या नहीं है, या EKYC, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, कि उसका डेटा पूरा, नाम, पता, एड्रेस, फोटो सब आ जाए। तो ये EKYC हम करते हैं बेस्ड ऑन दी बायोमेट्रिक ऑथ और OTP ऑथ, इसको हम EKYC बोलते हैं। नेक्स्ट,
एंड दिस इज अवर आधार इकोसिस्टम। जैसे एनरोलमेंट इकोसिस्टम में हमारे रजिस्ट्रार्स काम करते हैं एनरोलमेंट के लिए, इसके अंदर जो हमारे पास है वो आधार ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी और केवाईसी यूजर एजेंसी हम इनको बोलते हैं। आप देखेंगे कैसे कनेक्टेड है। यूआईडीआई डेटा सेंटर सेंट्रल में है और वो लीज लाइन से, प्राइवेट लीज लाइन से, एएसए से, इनको हम ऑथेंटिकेशन सर्विस एजेंसी हम बोलते हैं, इनके साथ कनेक्टेड है। यहाँ कोई इंटरनेट का कुछ नहीं है, मतलब कोई आप इंटरनेट के जरिए हैक नहीं कर पाएगा, अंदर घुस ही नहीं पाएगा। तो ये एएसए के आगे हमारे एयूएस हैं। तो जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे है वो एएसए भी है और एयूए भी है। बेसिकली एयूए का अगर हम इसको केवाईसी के लिए भी यूज़ करते हैं, इसको हम केयूए बोलते हैं, केवाईसी यूजर एजेंसी। तो डीआईटी यहाँ पे हमारा केएसए और केयूए दोनों हैं। उसके आगे फिर हम फर्दर सब केयूए, सब एयूए और ऑथेंटिकेशन डिवाइसेस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं और आधार होल्डर उन डिवाइसेस पे जाके पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस डिवाइसेस पे जाके अपने आप को ऑथेंटिकेट करता है। जैसे पीडीएस के अंदर हुआ या अटेंडेंस के अंदर हुआ या माइक्रो एटीएम्स में हुआ। नेक्स्ट। सो ये मैंने ब्रीफ में इकोसिस्टम बताया कि एनरोलमेंट हम कैसे कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन हम कैसे कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे चूंकि सारे सीनियर ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट के बैठे हैं तो यहाँ हम यूज़ कैसे करें आधार को। कुछ तो लोग यूज़ कर रहे हैं, पर जो नए डिपार्टमेंट है, हाउ टू यूज़ द आधार फैसिलिटी और आधार ऑथेंटिकेशन। तो उसके एक तरह से आप देखेंगे 4 अलग अलग लॉ में प्रोविज़न है। वन इज़ द सेक्शन 7 ऑफ द आधार एक्ट दैट सेज द वी कैन यूज़ आधार to transfer the subsidy or any service for which the expenditure is getting incurred from the consolidated fund of India or consolidated fund of the state. So state के पर्सपेक्टिव में कोई भी स्कीम जो हम लॉन्च कर रहे हैं उसमें अगर खर्चा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से हो रहा है तो वी कैन इशू ए नोटिफिकेशन, वी कैन मेक आधार एज ए कंडीशन कि आधार नहीं है तो उसको एनरोलमेंट स्लिप हमको देनी पड़ेगी। और कोई भी जब हम सर्विस देते हैं तो ऑफकोर्स उसके अंदर एक्सेप्शनल हैंडलिंग मैकेनिज्म हमको जरूर रखना है कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पीडीएस की दुकान पे गया और उसका कारणवश आधार नहीं चल पाया या कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया तो हमें डिनाई नहीं करना है। उसका एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग मैकेनिज्म की जैसे यहाँ पे नॉमिनी हमने बना रखे हैं कि सर्टेन गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल एक्ट एज ए नॉमिनी और वो उसके बिहार पे ऑथेंटिकेशन कर देते हैं कि ठीक है ये जो बेनिफिशियरी है जेन्युइन बेनिफिशियरी है, तो समवन शुड वाउच। और कोई भी आपको लगता है कि मैकेनिज्म जो आप ये क्रिएट कर सकते हैं, द डिपार्टमेंट कैन वेरी वेल कम आउट विद दैट सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म, लेकिन डिनायल ऑफ सर्विस नहीं होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। आधार कंडीशन है, हम उसको देखेंगे कि आधार फर्दर फिंगरप्रिंट से ऑथ हो या आइरिस से ऑथ हो, नाउ फेस ऑथेंटिकेशन भी आ गया उससे हो। एंड देन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जैसे 44B1 का जो हमारा प्रोविज़न है, जैसे अभी पैन कार्ड का लिंकिंग जो है वो उससे चल रहा है, बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर जो आधार यूज़ हो रहा है ना, तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में हमारा आता है। एंड देन वॉलेंट्री यूज़ ऑफ आधार इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट 44B2, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स काफ़ी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल जो कि अभी आईजीआर का है, जो अभी हमारे सब्सिक्वेंट सेशन के अंदर डिटेल के अंदर आईजीआर और पोखरा बताएंगे कि कैसे उन्होंने इस सेक्शन को यूज़ किया गुड गवर्नेंस के लिए। तो इसके अंदर वॉलेंट्री नेचर में है, लेकिन वन कैन इशू अ नोटिफिकेशन, उसका भी प्रोसेस है जो हम डिटेल में सब्सिक्वेंट प्रेजेंटेशन के अंदर उसको कवर किया जाएगा। तो वन कैन यूज़ अंडर सेक्शन 44B2 and Aadhaar authentication can be made mandatory under a law enacted by the Parliament section 47। तो सॉरी वो पैन की लिंकिंग इसमें आएगी, वो उसमें नहीं, दिस इज अ मैंडेटरी बिकॉज लॉ में प्रोविजन कर दिया गया है कि आपको आधार के साथ इसको लिंक करना ही पड़ेगा। एंड अदर कई बार हमने देखा कि शुरुआती दिनों में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी आधार को यूज़ करने लग गई थी, वो अब बिल्कुल स्ट्रिक्टली नो है। सो जो भी अगर आधार का ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूज़ करेगा उनको इन चारों में किसी न किसी में कैटेगरी में आना पड़ेगा। अदरवाइज उसका दूसरा प्रोविजन है ऑफलाइन यूज, जो हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन अगर करना तो उसको इधर सेक्शन 7, 44B1, 44B2 और सेक्शन 47 में ही नोटिफिकेशन इशू करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, सो दिस इज द ऑफलाइन वेरिफिकेशन। तो अभी ऑफलाइन वेरिफिकेशन के अंदर क्या है कि जो आधार हम इशू कर रहे हैं, तो अगर कई लोगों ने पीवीसी कार्ड अगर ऑर्डर करके अगर मंगाए होंगे या रिसेंटली ई आधार डाउनलोड किया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि क्यूआर कोड है एक। सो दैट इज ए डिजिटली साइंड क्यूआर कोड जो यूआईडीआई ने अपनी प्राइवेट की से साइन किया है एंड इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। तो इसको आप स्कैन करेंगे तो आपका पूरा जो मेटा डेटा है, आधार नंबर नहीं आएगा उसमें, वो मास्क्ड है,
बाकी सारी चीज़ें आएगी और मोबाइल का भी हैश रहेगा. सो ओनली नेम, एड्रेस एंड फोटो, ये आपको उसमें जब स्कैन करेंगे तो देखने को मिलेगा ऑफलाइन QR कोड को. तो उसके लिए भी रेगुलेशंस UIDAI ने निकाल दिया है. इसको हम ऑफलाइन वेरिफिकेशन सर्विस एंटिटीज, सीकिंग एंटिटीज बोलते हैं, OVSE. सो एनीवन कैन यूज दिस ऑफलाइन प्रोविजन of the Aadhaar by scanning the QR code, or they can consume digitally signed XML फाइल कि सेम आधार जो आपका है, जो आप आधार की फॉर्म में या PVC की फॉर्म में जो आपके पास आ रहा है या लेटर की फॉर्म में जो इशू कर रहे हैं, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हमारी साइट पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर किसी को अपना इलेक्ट्रॉनिक फाइल डाउनलोड करना है, वो हमारी साइट पे जाएगा, आधार से लॉगिन करेगा, OTP आएगा एंड दैट फाइल वन कैन डाउनलोड. और उसके बाद उस रेजिडेंट जिससे भी चाहे सर्विस लेने के लिए उस फाइल को वो भेज सकता है, शेयर कर सकता है यूजिंग पासकोड विद द कंसेंट कि ये मेरा आधार है. तो उससे फायदा ये रहेगा कि एक तो उसमें मास्क आधार है, तो पूरा आधार नहीं है. क्योंकि अभी अगर जो आधार लेटर कोई अगर मांगता है, हम देते हैं कई जगह पे, होटल्स में या कहीं पे विजिटर पास बनाना है, कहीं पे भी हम फटाक से हमारा आधार लेटर की कॉपी दे देते हैं, उसमें पूरा का पूरा आधार नंबर लिखा रहता है. तो दैट इज प्रोन टू मिसयूज इन फ्यूचर, राइट. तो इसीलिए मास्क आधार का जो कंसेप्ट है, जो हम लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो इस ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी डिजिटली XML फाइल और QR कोड को यूज कर सकते हैं. एंड आधार रेगुलेशन हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड रूल्स अराउंड वॉलंटरी यूज ऑफ आधार बाय आधार नंबर होल्डर. That is, it provides for voluntary use by a resident of his her Aadhaar number for any lawful purpose in any form, electronic or physical form, or through either offline verification or the authentication. Next. So this is the same thing that I have explained. So here just note physical form, of course we know the letter we issued, print e-Aadhaar or Aadhaar PVC, and XML file and the M-Aadhaar. So this M-Aadhaar I want to stress now in the the coming era when we are talking about the digital. So slowly I request all the department जो भी beneficiaries आते हैं और जिस form में भी when interact करते हैं, we can promote this M-Aadhaar. So because now smartphone का penetration बढ़ रहा है, तो we can instead of asking the verifying the paper based Aadhaar, or suppose you want to simply verify, if you want to consume, use digital XML file or scan the QR code, or simply we want to just verify the Aadhaar or check, we can ask or demand the M-Aadhaar, please show your M-Aadhaar. So in the M-Aadhaar, number one, various facilities are also available Aadhaar related. So it's a single app one can have on the mobile phone and can update Aadhaar or download Aadhaar, order PVC card. So many services are there in the M-Aadhaar app. And M-Aadhaar QR code is also there. So one can show that QR code and one can scan it. So next. Yeah. So this is how in letter that we are issuing, this is the QR code is coming, and e-Aadhaar also the QR code is coming, and XML file you can visit our website and download using the Aadhaar number and the OTP. And that XML file when you download, we have to give some passcode just for 4-digit passcode just to encrypt it, and we can share along with the passcode to anyone whom we want to. Next. And for state government, the agencies, it is free authentication, there is no charge. But for authentication of other entity, we charge 50 paisa. And eKYC, again, government agency, it is free. And telecom form, it is ₹1 per eKYC, and other entities is ₹3 eKYC. इसमें भी हमने काफ़ी reduction कर दिए थे, ताकि just to promote other entities also. So this is for the your knowledge, because for state perspective it is free, but for other entities it is ₹1 and 3 eKYC. And offline is always free. Next. So you can see the scale on which we are working. Every day we are receiving more than 6 crore authentication requests and 1 crore eKYC requests. And you can see year on year basis so many Aadhaar authentication transactions we are receiving. And it may be in the form of biometric, fingerprint, iris, face, OTP, demographic, multi-factor. See, again, it depends which service you are giving, what type of risk in that service. So maybe you can have a simple demo auth, you can have a OTP-based eKYC, you can have a fingerprint-based eKYC, or maybe you can have a multimodal or fusion, you want finger as well iris. So depending upon the requirement, you can introduce different type of authentication. So it totally depends upon the user department.
And even we have seen the data, the XML files, the digitally signed XML file, every day 1.5 thousand downloads we are seeing. QR code based, now it is there on the all Aadhaar letter and PVC. E-Aadhaar also 8 lakh plus E-Aadhaar are coming, and M-Aadhaar we have 1 crore subscribers. So now we are promoting this M-Aadhaar, so it will actually become the paperless thing and a digital artifact to carry the Aadhaar. Next. So now we have launched this face authentication, which is contactless and with the liveness check. And we have AI/ML model in place to check the liveliness of the fingerprint. And iris also is again a contactless and more secure than fingerprint-based authentication. So we will discuss this face authentication. We have a live demo on that in the subsequent session, so we'll cover next. Because the face authentication is the need of the hour, because even say Jivan Praman, etc., when the fingerprints are worn out, right? And so we can use the face authentication at least for the elderly person, etc. And it's a touch-less application that facilitate AUA application to authenticate a resident. Next. So that we will discuss in detail in the subsequent session. Next. So this is just a snapshot that this overall this Aadhaar project, and which is appreciated at the global level. So I will not go much into the detail that security by design. This is all the technical aspect that we are taking care, because we are going toward the digital era. So these security and privacy, these two are the very important things that one has to take care. Aadhaar is taking care of these two, and whenever you are designing any system, so you should keep these two principles into the mind, because you will become a custodian of the data after taking the data from the Aadhaar. So that we have to keep in mind. Maybe Aadhaar data vault, already DIT is working, and they are at the final stage to come out with the Aadhaar data vault. So that security by design is the technical point of view. And the privacy by policy also, we have issued all the SOPs and OMs to ensure the data security and privacy. But you see the privacy by design, that in our system we are not having any data. Maybe Aadhaar is being used in the PDS, in the PAN, in the NREGA, right? Maybe in the IGR. So many places people are using the Aadhaar. But we are not having any information from where this authentication has come, for what purpose has come. So it is the purpose agnostic digital ID, and we are having the minimalistic personal data, and there is no linkage of UIDAI database with other databases. So idea is the privacy by design is कि हमारे पास बस minimum data है, और जब पूछा जाएगा कि इसको ऑथेंटिकेट करिए, उसका जवाब दीजिए, हम दे देंगे, और कंसेंट बेस पे उसका E-KYC वो डेटा हम शेयर कर देंगे. दैट डिपार्टमेंट कैन कंज्यूम. हमारे पास उसका कोई ट्रेल नहीं रहता है, राइट. एंड इवन द ऑथेंटिकेशन जो हो रहा है उसका भी केवल 6 मंथ के लिए हम रखते हैं एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. उसके बाद वो भी डिलीट कर देते हैं, अनलेस अनटिल इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ. नेक्स्ट. सो द यूज ऑफ आधार, all departments, many departments are using, but still I will just repeat, it will act as an identifier. So सबसे बड़ा जो benefit आधार का होता है, straight away, एक तो ये कि जब आप आधार सीड करते हैं तो एक तो डेटा क्लीन होता जाता है ना. जब आप अगर डिनोवा क्रिएशन कर रहे हैं और उसके अंदर E-KYC यूज़ कर रहे हैं तो जैसा डेटा वैसा आ रहा है. अदरवाइज फील्ड में हमने देखा, जब आप डिपार्टमेंट में जब आप इसको हम आधार यूज़ कर रहे हैं तो जब फॉर्म्स है, जैसे यहाँ पे मराठी में कई फॉर्म्स रहते हैं, और उसमें जब नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम सुमनेश लिख दिया. नाउ आई एम एट द मर्सी ऑफ द डेटा एंट्री ऑपरेटर, वो अंग्रेजी में मेरा नाम कन्वर्ट कैसे करता है. अगर उसने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी तो बाद में मेरा आधार ऑथेंटिकेशन भी फेल हो जाता है, क्योंकि नाम में मेरा जो लिखा हुआ वो अलग सही स्पेलिंग लिखी हुई है, और यहाँ उसने मराठी से जब इंग्लिश में क्या थोड़ी मिस्टेक कर दी तो फेल हो जाता है. तो हमें ये छोटी छोटी चीजें भी जब आधार को इंप्लीमेंट करेंगे हमको ध्यान में रखनी है. एंड स्टेट अवे अगर सिंगल सोर्स अगर शुरू में ही अगर हम, जो कि अभी महाडीबीटी पोर्टल में यहाँ पे स्टार्ट किया गया है कि एप्लीकेशन में फर्स्ट डेटा यूजिंग द OTP, बेसिक डेटा वहीं से आता है, तो नाम वगैरह जो आधार में वैसा ही आएगा, तो फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी. तो एज ए आइडेंटिफायर और फेक एंड डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को हटाने में ये काम आता है. तो अगर ये दो चीज हमारी हो गई, एंड देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में ऑफ कोर्स आधार एज ए फाइनेंशियल एड्रेस यूज हो रहा है, बिकॉज इसी कारण से जो पेंडेमिक के अंदर जो अभी हमारा ट्रांसफर हुआ था पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो अभी उन्होंने केवल यहाँ से आधार मांगे थे, बेनिफिशियरी की लिस्ट मतलब आधार नंबर मांगे थे, और कुछ नहीं मांगा था. एंड पैसा डायरेक्टली आधार पेमेंट ब्रिज से थ्रू आधार एज ए फाइनेंशियल एड्रेस ट्रांसफर हो गया था. मतलब पहले जैसे नहीं है कि पहले स्टेट में आया, स्टेट ने फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड देयर आर लेयर्स. सो आधार
is really instrument to change the delivery of the services. It has transformed. Or PDS में, of course, Secretary PDS is going to make a presentation कि how this has changed the entire PDS system. So I will not go into the detail. That in the subsequent presentation he will cover. Next. So this is because the financial inclusion is required. Earlier, many people were not having the bank account. So in the absence of the bank account, we can't transfer the subsidy or any cash transfer, nothing. So that was missing. So using this Aadhaar, you can see opening of the bank account. So 43 crore bank accounts have been opened using Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Then, so it is used for the opening of the account. Then Aadhaar is a financial address that I have explained, that now we have a 80 crore unique bank account on the NPCI mapper. And then the transactions, कि पैसा तो दे दिया, उसको अगर कभी withdraw करना है या किसी को transfer करना है, तो आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जो कि बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट के थ्रू हमारे 5 लाख माइक्रो एटीएम्स पूरे कंट्री में अभी चल रहे हैं, तो उससे वो बैंकिंग वहाँ पे एट द डोर स्टेप और द बीसी के जगह पे हो रही है. सो आधार का फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये पूरा यूज है, ओपनिंग, ट्रांसफर एंड ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट. सो अल्टीमेटली दिस जैम ट्रिनिटी जो क्रिएट हो गई है कि जनधन, आधार एंड मोबाइल, तो ये तीनों मिलके है कि अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी बोल ही रहे थे कि बात हो रही थी कि अकेला आधार या अकेला मोबाइल. सो दिस इज द पावर ऑफ दीज थ्री, द जनधन, आधार एंड मोबाइल. सो हियर आधार इज प्रोवाइडिंग अ प्रेजेंस-लेस डिलीवरी. एंड इस पे भी जो एक हमारा प्रेजेंटेशन हमने रखा है आईजीआर का, दैट विल एक्सप्लेन हाउ it is helpful in the transformation. So Aadhaar is creating a presence-less delivery of the service. Next. Now in the end, see, this is something that because many people who are abandoned, maybe children or even the adult, जो हमें कहीं मिल जाते हैं और फिर उनको हम ऑर्फनेजेस में या सीनियर सिटीजन होम में ले आते हैं, तो वहाँ पे जब हम उनका एनरोलमेंट करते हैं तो उसके बाद पता लगता है कि इनका आधार पहले से किसी जगह पे इशूड है. तो ये एक तरह से हमें सोशली भी एक तरह से हमें इंक्लूजन जैसे काम कर रहा है कि हम उनको उनकी फैमिली से यूनाइट करवा रहे हैं. तो ये हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो अभी जो हमारा डिस्कशन मीटिंग्स में भी यहाँ पे हुआ है, तो अभी ऑल सीसीआई, ऑर्फनेजेस, आश्रमशाला, जहाँ जहाँ भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनका हम एनरोलमेंट तुरंत करते हैं ताकि ये पता लग जाए कि ये कहाँ के हैं और उनको हम फैमिली से रीयूनाइट कर पाएँ. लास्ट. नेक्स्ट. So in a nutshell, this is overall Aadhaar ecosystem, and in detail we will discuss in the subsequent presentation. That idea is that after learning this, we want innovation around this Aadhaar, and we have regional office here, our team is here, and we are continuously working with the state government. So we are ready to work with any of the department to either issuing the notification and to help in the technical architecture. We can take the help of our technical team also in the Bangalore, right? So either online authentication or offline or maybe the voluntary use. So in a nutshell, what we want to achieve, that ultimately the vision of the government of India, that or any state vision, that initially residents are applying for the service to the government, and we are verifying all the documents submitted by the resident from within the system. So why not we can create a system for which maybe PSIT can further throw some light, we can straight away reach to the resident. So thank you very much, and I hope this workshop will be useful to everyone. Thank you. Thank you, sir, for the overview of Aadhaar and sharing your valuable inputs. The overall workshop has been divided into two sections. The first part is related to recent changes in Aadhaar enrollment and authentication and its uses in Maharashtra. And the second part is related to DBT mission in India. To start with our first session, we have Colonel Akshay Yadav, Director of Maharashtra, Goa and Authentication. He will cover the recent changes in policies in Aadhaar ecosystem. Sir, if you agree, can I ask one or two, just to ensure that कि we are, तो एक दो क्वेश्चन मुझे सिर्फ आपसे पूछना था, शायद सभी के मन में होंगे, पर everybody is thinking when to ask, so let me just ask, just to make it more meaningful. मेरे को पहला क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आपने कहा कि ई-कॉमर्स में ऑनलाइन is not allowed using Aadhaar, right?
Now, what Tamil Nadu is doing and what we are proposing is that we will have the Aadhaar number, we will map it to another number which we will call Maha ID, which would be stored in the various databases, and Aadhaar would be stored in the Aadhaar data vault. Can we allow e-commerce companies or any company to do KYC using my Maha ID legally? Mike, take that. So what you was mentioning is what is being number of states are doing. जैसे हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र किया है, कर्नाटका ने कुटुंब किया है. So Aadhaar is the foundational ID. On top of that, there's another ID which is resting, which has lot more data. If you want to do online authentication, then you would have to reach the Aadhaar servers, the UIDAI servers. Unke through you can do the online authentication. As of now, the entities who are allowed to, Section 7 of the Aadhaar Act allows for consolidated fund of the state or the any expenditure from that. If you are giving a benefit, then you can do. And there's a second section which is the good governance section. Under the good governance section, as of now, it is only the state governments and the central governments which are allowed to use that good governance section. At the moment, we are still under examination internally whether we can expand this. So, if you were to ask me as of today, the activity is limited to the central or the state government. What you are saying is it will be the state government at the front end, but at the back end, there would be other private entities that can use it. I think we'll just have to get into the details of what would be the legal implications before I'm able to say a yes or no. But anything which helps good governance, that is something that we would be very happy to enable in case it is not already enabled. But if it is a purely commercial transaction, then that comes in a separate category. Controlled by MERCs and this thing. I understand. On that, there's no problem at all. On that, because that is akin to telecom. Telecom, I can just give you the background. Why? Because for national security reasons, SIM cards were being issued, and that's one of the reasons. Electricity falls very much in the good governance to prevent leakage of theft of electricity, to ensure that payments are done, DISCOM's health is there, energy security of the country. These are definitely things which fall within the ambit of good governance. Yeah, absolutely. Telecom companies, most of them are now private. So taking a cue from the previous presentation with regards to an overview on Aadhaar, I think we've got every member who's sitting here who's directly or indirectly involved in some manner, किसी भी तरीके से in terms of या तो आप आधार खुद यूज़ कर रहे हैं या आपके डिपार्टमेंट्स के द्वारा आधार एनरोलमेंट या अपडेट करा जा रहा है या आपके डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑथेंटिकेशन के माध्यम से वैलिडेशन करा जा रहा है कि किसी भी स्कीम में कितने लोग आप मैप कर सकते, हम मैप कर सकते हैं और क्या वो लोग उस स्कीम में मैप होने के लिए अधिकृत हैं कि नहीं और क्या उसमें कोई एक आदमी 2 या 3 आइडेंटिटीज़ के साथ शामिल हो रखा है कि नहीं. I will take 2 cues further. Last one from what Mr. Sumnesh Joshi, our DDG, mentioned, reuniting children. I will throw some light into it very briefly. Case in point of Mumbai only. That slide, we will not get into the details of what it reflected. What it got was person A lost a child at a particular station here. The parents filed a complaint in a police station. The police station which found the child was 5 kilometers away from where the complaint was filed. For 7 years, the child was in an orphanage. When the child went in for enrollment, the validation came back that he had already been enrolled, and the child was united with the family. That 7 years of his or her life could never and can never be replaced. So this is how our system is progressing.
On a lighter note, हम बात करेंगे in due course with regards to direct benefit transfer. We have esteemed speakers who will cover it, and I have a member from the NPCI team also, Sudipto Naik, who will cover a validation of ACH and APB transactions. But on a very simpler note, UPI से जो एक चीज़ आज की डेट में अगर हम ऑन अ लोकल लेवल उसे देखें जो बिल्कुल कम हुई है या जिसको बिल्कुल ही UPI ने वॉश आउट करा है, आई थिंक वो है जो कोई भी सामान खरीदने में हमें जो 3 चॉकलेट्स फ्री मिलती थी, आज की डेट में उसका ट्रांसफ़र जब आप करते हैं UPI के माध्यम से, सो आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कैश देते हैं. So that means the companies which were recommending and giving you those, the local vendors chocolates to give you as change for that unorganized 1 rupee, 2 rupee or 3 rupee which was coming as free to them, is now off the market. That is the impact that it has had. So with this as a prelude to my presentation, this is a little academic for the gentlemen and ladies on the first row and second row. There are some folders. They may look voluminous. I would request each one of you, even the third row, to try and take out your time to use and scan the QR codes which are there in the pamphlets. ये आपको feel देने के लिए हैं कि आप खुद इसे कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें कितनी सहूलियत है आधार में, और चंद एक पॉलिसीज जिनके ऊपर हमने थोड़ा सा पॉलिसी डायरेक्टिव चेंज करा है, किस वजह से करा है, इज व्हाट आई विल कवर. I would also like to draw your attention to a point. We have a ECMP kit which has been placed outside at the reception. All of us would have crossed it through. I would request you, when the lunch is there, please take out your time, just spend 5 odd minutes with the operator to orient yourself of what all has changed on the ECMP client. I have 2 operators from IPBP who are here. They are not here from the banking point of view. They are here from the service point of view. आज की डेट में Maharashtra was the first state जहाँ पे Department of Post ने अपने पोर्टल पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस इनेबल करा था. ये हमारा ही सजेशन था. PSIT इज वेल अवेयर ऑफ इट कि आप अपना ईमेल मोबाइल लिंकिंग डायरेक्टली उसकी रिक्वेस्ट बुक कर सकते हैं, और वो जो डाकिया है या पोस्टमैन है जो घर में चिट्ठी देने आता है, वो एक मोबाइल लेके आएगा, सिंगल फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक स्कैनर लेके आएगा और आपका ईमेल और मोबाइल लिंक कर देगा. और यही वो पोस्टमैन है जो हमने महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी लेवल पे WCD डिपार्टमेंट के साथ और एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मैप करा है फॉर चाइल्ड एनरोलमेंट टू कवर दैट गैप ऑफ चाइल्ड एनरोलमेंट. Maharashtra was at around about, you'll be happy to know, was at 57 lakhs around about 5 months back. In the last 5 odd months, there has been a concerted effort that the state nodal department, the regional office and all departments have worked together, and we have reduced 7 lakhs as a pendency, and we are at 50 lakhs today. If you compare what was achieved year on year earlier, this is a very marked record which has taken place, where child enrollment is a push that has been given. The Chief Secretary in the last UDIC meeting also gave the same directive that we will set a target from the state perspective of 31st of December to complete this pendency. We will work towards it. The idea is to reduce it as much as possible. Coming to the presentation proper, I will be covering this presentation in the following 4 parts, which are self-explanatory. Just to give you a insight into one of the most important activities that the authority has just started. It is document update. This activity started on 17th of August. I have briefed in certain forums what was the requirement. Our CEO is here. This was a requirement that came from the central government, and within UIDAI also. It is focusing towards any रेजिडेंट जो 10 साल से किसी एक जगह पे रह रहा है, और क्योंकि उसका एड्रेस नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि वो वहीं रह रहा है जहाँ पे उसने जिस एड्रेस से एनरोलमेंट करवाया था और उसके बाद उसने कोई अपडेट नहीं करवाया है, तो हमने एक फीचर फंक्शनैलिटी अभी ECMP क्लाइंट में स्टार्ट करी है, विच इज़ डॉक्यूमेंट अपडेट. नाउ द आइडिया इज़ कि वी आर लुकिंग एट एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया. आधार को शुरू हुए 10 साल हो गए हैं. कई लोग रेगुलर बेसिस पे अपना पोस्टिंग होने पे, कहीं और जाने पे अपना एड्रेस चेंज करवा लेते हैं. मोबाइल नंबर आजकल मोर और लेस परमानेंट है, तो उनको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ईमेल मोर और लेस परमानेंट है, तो उसको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो वी आर जस्ट लुकिंग एट कि भाई एनी पॉइंट ऑफ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ एड्रेस
अगर आपने पिछले 10 साल में नहीं कराया तो आप इसका अपडेट कराएं। ये आप ही की सहूलियत विद इन द सिस्टम बढ़ाएगा। आप ही को जिन स्कीम्स में हम जन जागरण के माध्यम से लोगों को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं उनका वैलिडेशन आसानी से होएगा और उनका करेक्ट अपडेटेड डेटा हर एक डिपार्टमेंट को मिलेगा। नाउ दिस एक्टिविटी वाज स्टार्टेड बेस्ड ऑन द DO letter of Secretary Mehti, which was given to all chief secretaries on 23rd of August. I would mention 2-3 points here. The regional office carried out a physical survey in one of the districts. We have carried out a pilot which has started in 3 districts in Maharashtra, which are Pune, Mumbai and Thane. These were part of 40 districts pan-India where the pilot was started. Now we are gradually expanding it. In fact, we are expanding it to a scale that by end of December, it will get spanned out to all 735 plus districts of India covering all states. So इस चीज़ इस activity को इतनी तवज्जो दी जा रही है. You would be happy to know, next slide please, you would be happy to know that in the month of October, though every activity takes a little bit of time, but October के महीने में the second highest count is of Maharashtra. We've done approximately 6,000 odd updates. This figure is last of around about 13th. The figure I'm quoting is of as of yesterday. This is basically because of the push given by every state registrar, every non-state registrar who have cumulatively worked together at district level, not only in these 3 districts, but across the board in all 36 districts of Maharashtra to achieve it. Next slide, please. There has been effort that has been put into it to ensure that there is sensitization not only of departments but of operators, not only of operators but the district collectors, because we are looking कि ये पूरी activity district level पे जो पूरे welfare या resident specific कार्यक्रम का सूत्रधार होता है वो district collector होता है, तो उसके माध्यम से ये activity करी जाए, because हर एक registrar जो district में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी DLCC में आके district collector की meeting में बैठता है और ये डायरेक्शन जब सेंट्रली दिया जाता है तो इसको इंप्लीमेंट करने में आसानी होती है. नेक्स्ट, इस एक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए रीजनल ऑफिस की तरफ से देयर इज आईसी कैंपेन जो हमारे हेडक्वार्टर ने परमिट करी थी. हमने उसको एक जरिया या एक तरफा बनाने की बजाय व्हाट वी डिड वाज वी कॉल्ड ऑल द 36 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, we got them onboarded, we started training operators and we gave the IC material to the district coordinators only, so that they have a sense of ownership कि वो जो कर रहे हैं वो उसमें बिलीव करते हैं. And then we requested and suggested to them that आप जब जाएंगे तो ये IIC मटीरियल अपने ऑपरेटर्स के साथ साथ बाकी रजिस्ट्रार के ऑपरेटर्स को भी दीजिए, बिकॉज उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप एक साथ एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तो ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाएगी. दिस इज जस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट. नेक्स्ट, in fact, one of the good points that has come is we requested and suggested to the district collectors of Pune, Mumbai and Thane to carry out spot inspection. हम लोग सब जानते हैं कि अगर DC on the ground कहीं जाए उसकी एक विजिट से जो इम्पैक्ट अक्रॉस द फील्ड पड़ता है वो कहीं पे भी मैच नहीं करा जा सकता है. तो वी हैव हैड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स who've gone carried out spot inspections just to get the message home that this is being monitored and it is an activity which is ultimately going to benefit residents. Next. Coming to the next part of my presentation, which is over around about 5 to 6 slides, it's a little more academic in nature. Most of these OMs जितने हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं, ये सारे OMs एक फोल्डर में आपके लिए हमने एक कंसोलिडेटेड बाइंडेड डॉक्यूमेंट के तौर पे रखवाए हैं. मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जब ये आप यहाँ से लेके जाएं तो हमने ईमेल पे पोस्ट लेटर्स के द्वारा ये सभी डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी सर्कुलेट कर दिए हैं. बट यू कैन जस्ट टेक आउट सम टाइम टू गो ओवर इट, बिकॉज जो इनमें लिखा हुआ है इनमें हर एक चीज़ का एक समय सारणी दे रखी है. कौन सी एक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट जो रेजिडेंट्स का है वो कब किस तरीके से चेंज हुई है या उसमें क्या डायरेक्शंस आ रखे हैं. ये हमारे को वी नीड टू अंडरस्टैंड वन पार्ट. फॉर एनी डिपार्टमेंट टू डू ऑथेंटिकेशन वी हैव टू कंप्लीट एनरोलमेंट. 134 Aadhars, 34 crore Aadhaar numbers have already been generated. We have around about 98% of the adult population which is already mapped. We have 93% average which is pan-India. When we look at these numbers, ये पूरा system चलाने के लिए सबसे पहला step is enrollment. So the directives are focused towards strengthening the Aadhaar enrollment ecosystem. There are some changes with regards to authentication which we are advocating. They will be covered. So I'll cover them in the subsequent slides. Next.
The first part is with regards to CSC eGov. The idea of this is to provide Aadhaar services at block sub-district level. The point is, आज की डेट में अगर मुझे 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर चल के जाना है कहीं पे विद इन अ डिस्ट्रिक्ट या तालुका लेवल, वो इतना दूर जाने की बजाय क्या कोई पीईसी मेरे क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में हो सकता है? तो उसके लिए हमने एक प्रायोरिटाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें डीआईटी के साथ हम काम कर रहे हैं, बीइंग द स्टेट नोडल डिपार्टमेंट। एंड इस पूरी स्ट्रैटेजी का थॉट प्रोसेस ये है कि जो आधार सर्विसेज हैं वो एज क्लोज टू द डोर स्टेप ऑफ अ रेजिडेंट वो प्रोवाइड करी जा सकें। एंड सीएससी इज नॉट द ओनली रजिस्ट्रार, द स्टेट नोडल रजिस्ट्रार एंड स्टेट रजिस्ट्रार्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रार के जो परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर्स चलते हैं ये उसको भी इनकम्पास करता है। नेक्स्ट इज विद रिगार्ड्स टू इंस्पेक्शंस एंड मॉनिटरिंग। ये पॉइंट निरंतर आता है एंड निरंतर हमारा पॉइंट आता है, यू वुड बी रीडिंग पेपर्स दैट देयर हैज बीन फ्रॉड, देयर इज अ आइडेंटिटी दैट हैज बीन somebody's Aadhaar number is being used by somebody else. So these inspections are to check the grassroots level process कि जहाँ पे एनरोलमेंट ऑपरेटर आपका अपडेट कर रहा है, बिकॉज मार्केट आज की डेट में अपडेट का है सिंस एनरोलमेंट इज एट सेटिस्फैक्शन लेवल्स ऑफ नियर 100%. सो उसको मॉनिटर करने के लिए क्या वो सही प्रोसेस, क्या वो सही गाइडलाइंस, क्या वो सही प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, ये उसके लिए है. इसमें वी द यूआईडीआई पर्सपेक्टिव इज दैट लेट द रजिस्ट्रार्स कैरी आउट अ सेल्फ इंस्पेक्शन. उनको हमने एक टारगेट दिया है कि आप अपने टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स या किट्स जो चला रहे हैं उनका आप 5% इंस्पेक्शन करें, एंड यूआईडीआई जो आपका 5% का नंबर आएगा उसका 10% इंस्पेक्शन करेगा फ्रॉम द अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू विद इन द स्टेट, सो दैट वी हैव अ monitoring mechanism not only at the registrar level but from the regional office level, and then we can work together with the state nodal department in case we find that there are certain aspects that need to be looked into. The next part is availability of RD devices. This OM came on 17th of December. In fact, I can say it very happily, and for a matter of record, the Principal Secretary IT is here. He gave directions for this to be implemented on a time-bound manner. किस लिए? नंबर वन, आरडी डिवाइसेस हमने पहले भी बता रखा था कि जो आपके ईसीएमपी क्लाइंट्स जो चलते हैं जहाँ पे एनरोलमेंट करा जाता है उनमें सिंगल फिंगरप्रिंट आरडी डिवाइस या आपका आइरिस सिंगल आई आइरिस डिवाइस है. किस लिए? कि अगर आपको किसी का फाइंड आधार करना है या आपको उसका ऑथेंटिकेशन करना है ऑन द किट, तो वो आपकी किट पे अगर वो डिवाइस होएगा तो वो रेजिडेंट को किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो उसी किट पे जाके ये एक्टिविटी कंप्लीट कर पाएगा और उसको कंफर्मेशन मिल पाएगा. कई बार ये होता है रेजिडेंट को अपना आधार नंबर याद रहता है या अपना एड्रेस याद रहता है या पिन कोड याद रहता है और उसको कंफर्म करने की ज़रूरत होती है कि भाई मेरे 3-4 चीज़ें मैंने लास्ट अपडेट क्या करवाया था, मेरे को एड्रेस याद नहीं है पर आधार नंबर याद है और अब मैं एड्रेस अपडेट करवाना चाहता हूँ, तो मैं इस एड्रेस मेरा ये कंफर्म करिए कौन सा एड्रेस है. सो इट इज़ फॉर यूटिलाइजिंग देयर एज वेल एज फॉर डॉक्यूमेंट अपडेट. नेक्स्ट, the next OM is with regards to providing facility of Aadhaar enrollment and update for all 7 days. This point has been covered previously. We are all getting into a system where we are looking at everybody getting an opportunity irrespective of days of a week, whether you are restricted to weekdays or holidays. आपके और मेरे माध्यम से अगर देखें तो सैटरडे संडे आर द टाइम दैट वी डिवोट टू आवर ओन हाउस होल्ड चोज, एंड आउट ऑफ वन ऑफ दोज थिंग्स इज कि आपको अपने बच्चे का अगर MBO करवाना है जो स्कूल में नहीं हो पाया या आप वर्किंग आवर्स में नहीं कर पाए, तो क्या आप उसको लेके जा सकते हैं? क्या कोई एनरोलमेंट सेंटर खुला होगा? या आपने अपना मोबाइल या ईमेल लिंक करवाना है? या आपने अपना मोबाइल लिंक करवाना है, तो क्या आप वो लिंक करवाने के लिए आप सैटरडे या संडे को अपने नियरेस्ट एनरोलमेंट सेंटर पे जा सकते हैं. सो इसमें ये कहा गया है कि बेसिकली 10% ऑफ किट्स हर एक रजिस्ट्रार की हर एक सैटरडे संडे को चलनी चाहिए. रजिस्ट्रार कोई एक नॉमिनेटेड डे को चुन सकता है वीकडे में जिसमें वो अपना ब्रेक ले सकता है, ताकि हर 7 दिन की साइकिल में एक वर्किंग डे पे उसको ब्रेक मिल जाए, वो सैटरडे संडे ना हो. और अगर 10% किट्स हर एक रजिस्ट्रार की चलेंगी तो percolation of kits at field level will be adequate to meet this requirement of everybody.
Next, with regards to the point number 5, this activity in fact is already over. UIDAI went into a process of revalidating by taking a grassroots level feedback with regards to documents or suggestions from the environment for including documents which can be considered as a POI or POA as a part of revision of our list. We have issued a directive on 1st of July. This activity was carried out in the month of September by ENU division. It went on through the print media. It went on through the social media, it went on Facebook, there was a QR code that was given. Any resident could access the QR code, log in and give a suggestion that he or she wanted to consider a particular document. That feedback process, last date was 30th September. Our ENU division is looking into it. We will be coming out with the next directive on this once that validation has been carried out. The next part is with regards to adult enrollment. This point is coming up quite regularly. We are discussing it in different forums. ये point किस लिए आ रहा है? ये point इसलिए आ रहा है कि अगर आप age wise band pendency देखें, तो highest pendency is in the age band of 0 to 5. The next pendency is actually not with regards to enrollment, but with regards to higher count of mandatory biometric update, which is in the category of 6 to 18 years, or 6 to 18 years. 18 years and above की जो population है, when we say that 98% of the adult population has been enrolled, that means किस लिए ये हुआ है? पिछले 10 साल में enrollment हुआ, तो जो आम नागरिक 10 साल पहले से 5 साल का था, उसको 10 साल मिल गए हैं अपने आप को एनरोल करवाने के लिए. जो उस समय 15 साल का था, आज वो 25 साल का अडल्ट है और वो एनरोल हो चुका है. अब आज की डेट में अगर किसी सेंटर पे कोई जा रहा है, नागरिक की भी उसका एनरोलमेंट करा जाना है, तो देयर हैज टू बी सम वैलिड रीजन कि वो लेट क्यों हुआ. किसी को कोई एनरोलमेंट की सर्विस डिनाई नहीं करी जाएगी, बट इट विल बी मॉनिटर्ड टू इंश्योर दैट एनीबडी बीइंग एनरोल्ड इज बीइंग एनरोल्ड आफ्टर ड्यू डेलिबरेशन, एंड इट इज नॉट अ एक्सरसाइज दैट somebody is coming requesting that I be enrolled based on a standard format and gets enrolled in the above 18 category. There is a link point in this OM, this which will come in the subsequent slide, but I'll cover it here only. Adult enrollment के लिए the ENU division is creating a state portal which will come up in due course of time, and once that comes up, there are state nodal officers who are to be assigned. The chief secretary in the UID implementation committee meeting has already given directions for it, which the state nodal department is looking into. But the point is why this is being done. This is being done because we are looking at validation not only from our prospective operator but from the state perspective as well. आपको पता होना चाहिए कि आप किसका enrollment कर रहे हैं और क्या वो सही process के द्वारा करा जा रहा है कि नहीं करा जा रहा है. Next. Now we come to points 7, 8 and 9. They basically cover new enrollment for children. जो जहाँ पे पहले आपका 0 to 5 and age band category में आपके parent का एक आधार नंबर जाता था, अभी दोनों के लिए जाएगा, और ये 5 to 18 कैटेगरी के लिए भी है. 0 to 5 and उसके above कैटेगरी है, उसमें enrollment पे कोई restriction नहीं डाला गया है. पॉइंट नंबर 8 ये अगेन कवर करा हुआ है और आगे भी आएगा किस लिए ये जरूरी है. देयर वाज अ डीओ लेटर दैट वाज सेंड बाय सीओ यूआईडीआई. दिस इज विद रिगार्ड्स टू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. Why this is essential? It is essential so that anywhere where you are giving a confirmation with regards to a proof of your identity for whether you want to do a LNL agreement, you want to purchase property, you want to log yourself in and link your account with the Aadhaar, it has to be confirmed that it is you who is doing it. The means of confirming it and the most proactive means of confirming it is biometric authentication. Next, with regards to terms and conditions, this is specific to the enrollment agencies. I will not cover it. This is basically from the implementation point of view that every enrollment agency has to submit their revised terms of engagement. This is a continuous activity with regards to certain changes in clauses. That's why this has been circulated to all enrollment agencies. Next. Point number 10 covers constitution of district level coordination committees. You would be happy to know that district level coordination committees, which are headed by the district collectors, have already had their meetings in Mumbai, Pune and Thane. The target date for completion for the first quarter, and these are supposed to be quarterly level meetings, is 31st of December. So we are looking at proactive support from all district collectors. Directions for the same have already been given. Why these have been given is we are giving a pointed request to all district collectors that have the DLCC meetings and get the registrars working in
the district jurisdiction on board and make sure that they get a sense that every activity is being monitored. Certain members who are to constitute the part or as the quorum members for these DLCC have been given and enumerated in this OM. Next. UID Implementation Committee for Maharashtra has already been convened. We are all aware it took place on 10th of October. The idea is that at state level, once a year, the under the chairmanship of the Chief Secretary and the constituent members of the UID Implementation Committee, the next year's roadmap is planned of what we have to do, and aspects where we have found certain gaps can be addressed during the meetings itself. Establishment of ASKs is an offshoot from the point that I told that we are looking at CSE governance and UIDI ASKs coming up at district level so that outreach and availability in terms of enrollment centers is there. Next. Just a snapshot of the UIDIC Implementation Committee. Point 13, 14, 15. More or less, I have already covered directly or indirectly. They are part of the monitoring mechanism. I will just cover point number 13, automated corrective action. This is basically looking at removing inactive operators and machines from the system. UIDAI had carried out this activity around about 6 months back, where the target period was any operator or machine that had been registered, onboarded, but had not carried out any transaction for the period of last 12 months. Now we have telescoped and reduced the timeline to 6 months. The idea is if you have been onboarded as an operator and you have a kit with you, and if you're not using it, then you don't need to be in the ecosystem. That kit is open to being taken for parallel enrollment. Your biometrics may be taken and somebody may utilize a gummy fingerprint to use it somewhere else, so it is better to weed it out of the ecosystem. With regards to point number, I'll skip to point number 16, state nodal officers requirement I have already given. Shifting of EAs from outsourced model to in-house model. This activity will come up. This OM has just come up on 14th of October. The idea is that in due course by 1st of April 2023, we are looking at a confirmation from all nodal departments or registrars, whether government or private, in the manner in which they are working, whether they are working on an outsourced model and an in-house model, and whether they can come into an in-house model based on the directives that have been listed. Next. This is a summary of the action timelines. I will not take too much of time here. Next, come here. Last 3 slides that I have are on recent initiatives. These basically look at the first part, the DDG had already covered. The idea was to make it accessible to everybody. That's why these charges were reduced. The COUIDI, after this directive came out, had a meeting with RBI as well as SEBI and BSE. It was welcomed across the board by all members or partners of the ecosystem. The reduction in charges has a direct impact on the amount of usage in terms of that restricting factor of money from the commercial viability point of view and also from the residents' point of view. Next, there is a policy that came up in the month of December last year, which pertains to the data sharing. It is in 3 parts. Point of attention. Any medium of sharing has to have a consent of the resident, which is the heading of the slide, as is evident. The modalities are bifurcated into 3 parts, whether you are wanting to share it between departments of the center or state governments. What you can share is reflected on the right side. Point to note, the directive or the OM states very clearly that within the jurisdiction of central government, all departments of central government will be considered as one entity, and within the jurisdiction of the state government, all departments will be considered as one entity. And that is the reason we have suggested, and PSIT has been kind enough to accept, that we should take out one notification for multiple schemes so that we have a clarity, and this in due course will facilitate inter-departmental exchange of data for confirmation with regards to seeding, confirmation with regards to eligibility, and confirmation with regards to the load factor in terms of population strength and size. Next is with regards to between state and center, that is the state government and the central governments, inter se, what all can be shared is as mentioned. Again, the point to note is it has to be consent based. The last part is with regards to scenarios where the central government schemes are being implemented in the states. Particular references to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Any data from that scheme, in case it is being run in the state, if it is required from the central repository, can be taken, provided the consent of the resident is there.
Lastly, the last recent initiative was covered earlier, but again, on a lighter note, I'll take your attention. We go to restaurants, we are traveling. Most of the times, we all are busy with our mobiles. All our good mornings are coming on WhatsApp, multiple numbers of them. We chat with our family when we are eating food, and one of the members is always using a mobile. This mobile has become an integral part of our life. Why not utilize it as part of the Trinity, jam Trinity, to ease the way with which you carry out authentication? Technology has now reached to a level where every person can afford a mobile. The restricting guideline was that the selfie camera of that mobile should have 5 megapixels. And on that 5 megapixels, API, which is an Android-based API on assisted mode, developed by different entities. Currently, the financial sector is working on it. Jeevan Praman verification, that is life certificate for all central government employees who are pensioners, is already live. And the National Health Agency is issuing Ayushman Bharat cards through face authentication. The simplicity of this activity also encompasses its power. Your iris recognition or authentication, if it fails, your OTP definitely is essential, it will not fail. The moment it fails, it gives the department a second option as part of exceptional handling to carry out authentication. So that is where it can be capitalized on. Over the next 1 minute or half a minute, my compliance manager will give a first show window of face authentication till the fetch of data. This is to showcase how simple it is. The integration and what we are showing is basically admin access that we have of the National Health Agency. And this is what she will showcase now, and after that I will wind up. Come. I will try to show the face authentication through PMJY portal, that is Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana portal. And this portal is basically used to generate PMJY cards, delivery of it, and the other benefits related to PMJY. I am onboarded in this testing environment as an operator. So I will try to do the authentication and do the eKYC through the face authentication here for the operator. What she is doing is she has first given her Aadhaar credentials. Based on the Aadhaar credentials, she's used check the box where she wants to carry out a face authentication. Based on that box credential confirmation, there is an integration of devices that has to take place in terms of the mobile that she is using. So a QR code is generated where the mapping of the device on the system has to be done, and then that device will open up and allow her to take a selfie. That selfie will be checked for liveliness by her blinking her eyes, and that is all that is required to confirm whether you are live or no. First, we will do the device pairing. We will be using our own phone as a face authentication devices. We do not need any separate device for face authentication. We have face RD services which we have installed in this mobile phone, and I'll be doing the device pairing first, and then I will show you the face authentication. Okay, on account of time, next slide, Abhishek. Come to the next slide, don't worry. If there are any questions, I'll be more than happy to take. Otherwise, we'll have a Q&A session in the end as well. That is all from my side. Thank you. Only question about face authentication is that does it mandatorily require your own mobile device or any other device also can do it?
it requires your device, or you can use somebody else's device, provide your number that is registered on which the confirmation will be coming is the same. So preferably it has to be only your own device, because that confirmation will come to your device. Thank you. Thank you, sir, for the brief introduction on OMs of enrollment and update and authentication and sharing the new initiatives of Aadhaar authentication. As Maharashtra is being in forefront of implementation of Aadhaar authentication into various applications in order to provide maximum benefit to the residents of Maharashtra, we have dignitaries from Department of IGR, Pokhara and Food and Civil Supplies. I firstly request Shri Shravan Hardikar, IGR from Revenue Department to share his views. Good morning, all of you. Dr. Garg, CEO, UID, Gupta sir, every other officer from my cadre and the state, and the UID officials. Thank you, UID, for organizing this workshop. Sumnesh ji, I would try to be brief. This Aadhaar has been a revolution, and I would be happy to state that Registration and Stamps Department has been one of the pioneering departments to adopt the voluntary use of Aadhaar authentication even before it was made widely applicable for DBT or any other purposes. It was way back in 2014 that Registration and Stamps Department of Maharashtra started the use of Aadhaar authentication on voluntary basis. I am sure Sumnesh ji may be able to share the better history of the struggle and the adoption process, because I think after 2014 only the case went to the Supreme Court, and the government and the Aadhaar authority had to contest and actually allow for the mass scale use of the Aadhaar. So the use case that we are using for Aadhaar here is in a registration process for various registration, mandatory registration of the property documents, the transfer of property documents. Whenever a party go to the registrar offices for registering their documents, now you can already waive off the presence of the identifiers if you are using eKYC for authentication. Now, this was the simple use case that we started operations with. Now we have progressed and used this opportunity to bring ease of doing business and quality of services at the doorstep of the people through slight change and modification in the process, the way we conduct, and that is e-registration. Now, e-registration, for the benefit of the others, it is not just computerized registration. Computerization has been in existence in Maharashtra since 2002. We have already gone for presence-less registrations. So I'll be presenting a small presentation here. Next. So if you all recollect your experience of registration processes, this is how the registration offices look like. They're all crowded, dingy. These are better lit offices where I could take better photographs. Otherwise, normally the situation is even worse. People are waiting outside, waiting for their turns to come. And now the stamp duty paid on transactions is quite high. We are paying anything upwards of 5 lakh rupees on any single transaction, and yet we are not getting the proper service because of obvious reasons, that there is a ecosystem which is all based on a single registrar sitting there and identifying the persons, registering the process document and storing the same into our database. For this, people have to spend multiple hours into these offices, sometimes even days, for registering the process, and yet the experience is not memorable. Now we tried to bring change into this experience by using Aadhaar authentication and taking the service to the doorstep of the citizens. Next. So this is the transformation that has happened.
For two categories of documents now, people don't have to come to our offices. People can complete the registration processes. The part of registration process sitting at home, that is for the leave and license agreements. Many of you must have already executed leave and license documents sitting at home. The registrations, the part of the registration process actually capturing your identities, capturing the document. Even the document execution which is done digitally is done remotely at the location of the user, maybe at a house. So you can see here a senior citizen, elderly citizen, with the help of some service provider is doing the registration sitting at home on his laptop. Second is the new use case that has been launched since last year during COVID, and that is registration of first sale of agreement to sale of a first sale of flat of a RERA registered developer that can happen at a developer's office or a site chosen by the developer or the builder. Now this is a facility that has gone live. This is also a self-help portal where there was a problem. In leave and license, there were a standard document, model document template was being used, but now what we have gone ahead and create a self-help portal on which any template document whichever the developer wants to upload can upload himself. Once that is approved, then by using Aadhaar authentication on a voluntary basis, eKYC authentication, the registration can happen in a comfortable environment in developer's office or even at the residence of the buyer if the developer is willing to provide that service. Next. So far I have already narrated the journey of this e-registration. Since 2014, when we first launched e-registration, we have been using Aadhaar authentication. It is a very simple use of Aadhaar for identifying the person, that is eKYC. And I am happy to share that so far we have completed the registration process for roughly around 3.7 million documents or transactions. Now in agreement to sale also, which is a very high value transaction, that roughly the transactions are worth of crores of rupees. The stamp duty collected on that transactions is around 4 to 5 lakh rupees. And thanks to IT Act amendment which has come recently in last week, which will enable the transfer of document to be signed by using e-sign, that is going to enable the mortgages to be registered sitting in banks. The bankers don't have to come to our office for registering their simple mortgages. Otherwise, they have to come to the registrar offices. So lot of ease of doing business is going to happen by using e-registration process. Total load that is happening in the daily registration is around 27% of the documents. In leave and license, the load is almost 90% of our documents are now e-registered on leave and license. Roughly 6,000 documents per day are getting registered online. So this is kind of ecosystem that we are talking about. That means if we assume that roughly 5 to 6 people are involved in one transaction, that means we are sending around 30,000 eKYC requests per day for authentication. And the people have also becoming very demanding, and they are requesting that these services can be expanded for other types of documents, which we will soon do, because now the technology is available, the platform is available to upload any type of a document, get it assessed by the collector of stamp or joint district registrar, decide its stamp duty, pay the stamp duty online, and by using Aadhaar authentication, do the registration process sitting at your home, sitting in some premise which is pre-approved, and then the registrar who is sitting at the back office, sitting in our headquarter, he can complete the registration process by verifying the eKYC data. Next. So this is the standard legal ecosystem that we have adopted. We have used the simple amendment was made in 2012 to 2013. In the Registration Act for state specific amendment was inserted. E-registration rules have been formed, and under that the powers have been given to IGR to amend the rules as and when required by the direction from the state government to enable better features of Aadhaar
to be used and e-registration services to be expanded for the use of the citizens. We also made e-registration specific rules for the use of e-KYC. Subsequently, initially we started off with live-in license documents, then we have expanded to agreement to sale, and now we have also started using notice of intimation of hypothecation that is being approved by the banks. That is, when the deposit of title happens and the loan is disbursed on a flat, the original document is kept at the bank, but the notice of intimation is now being filed at the bank stage itself or by the person who has taken the loan online. They don't have to come to our office. So these are the three use cases which are being done. Here the authentication is biometric, e-KYC data is taken. The e-KYC data which comes only is stored, attached with the document flow, which is then presented to the sub-registrar who is sitting at the back office. He verifies that the person who is registering, whose photo matches with the e-KYC data, the demographic data which has come to him. Once it is verified, then only he authorizes the e-registration. I think this is the service which is crucial for providing the service at the doorstep of the citizens. Next. So I won't delve much into the process because it's quite simple to understand. It is simply a workflow which has been enabled due to the use of e-KYC. We have already been given the permission under section 4 of good governance, and we are doing the compliances for Aadhaar. We are also in the process of upgrading our software to 2.5 version, and soon we will be also in a process of using face recognition as soon as the new version is available. I think I'll stop here. If there are any questions, you may ask. Yes? Sir, we use for e-registration, but for physical registration, what is the news that you are going to go away with witness? So if anybody voluntarily goes for use of Aadhaar authentication, then there is already no need for a witness. That has not been publicized till the base level. That is publicized and that is already being used. So as far as my knowledge is there, because of COVID, this was not in use, because we had kept biometric authentication suspended for some time during COVID. Now it has been reinstalled, and I am sure almost more than 50% transactions people are voluntarily using e-KYC. I will publicize this further. Witnesses are not needed. If you do e-KYC there, witnesses are not needed. Sub-registrar will only authenticate by using e-KYC, and it is not, the witness is not needed for that. Thank you. Thank you, sir. Now I request Shri Parimal Singh, Project Director from Project on Climate Resilient Agriculture, Pokhara. Good morning, everybody. I think it was quite an instructive first half where we got to hear a lot about the changes that the Aadhaar ecosystem is bringing in and how it is serving as a very, very important change agent. I am representing the Nanaji Deshmukh Krishi Sanjeevani Prakalp, which is better and more popularly known as Pokhara, or the Project on Climate Resilient Agriculture. Now, Pokhara is a World Bank supported project along with the government of Maharashtra, which is aiming at trying to address the variability in the climate to provide resilient agriculture in some of the most vulnerable districts as far as agriculture is concerned, largely in Marathwada and Vidarbha. Can you go to the next slide, please? In this project is worth about 4,000 crore over a period of 6 years. It started in 2018 and is due till 2024 June. And the challenge was that Pokhara intended to deliver
the services of climate resilient agriculture in a way which would not be business as usual, and therefore it relied on the Aadhaar architecture and on a very good end-to-end IT system to deliver these services. Now this project is operable in 16 districts and a total of 5,284 villages. So, and a very large number of farmers, and some of them in the, you can see the map, and that orange part is the saline soil of Akola, Amravati and other places. There are, in the Pokhara ecosystem, there are 11 lakh registered farmers. We have received 26 lakh applications at various levels of processing, and we have made 4.8 lakh disbursements through the DBT system. So it's quite a large clientele or large number of stakeholders that we are talking about. So there are a whole lot of things to talk about in Pokhara which are also outside the Aadhaar ecosystem, but right now, since the discussion is on Aadhaar, I'll try to make it brief. We'll go ahead in the next slide, please. So basically, we are using the Aadhaar ecosystem in two modules. One is the farmer module. The farmer module would be giving individual benefits. The individual benefits are related to schemes like wells, farm ponds, drip systems and other things. And there is the FPC module, which is for the farmer producer companies. So when farmer producer companies are establishing their value chains, building godowns, etc. So also we are paying them through the DBT module. The total Aadhaar based registered farmers are 11.6 lakhs, and the successful disbursement in Aadhaar linked bank accounts has been to a tune of 4.86 lakh, and amount disbursed is 2259 crores and another 200 crore or so in the FPC module. It is the first project in Maharashtra, I guess my colleague Sohail is also here, to implement Aadhaar API 2.5. With the help of UIDAI, we managed to do this, and for easy KYC of farmers. It has implemented the Aadhaar vault functionality to safeguard the details of the farmers. Now, of course, the Aadhaar vault here has not used the hardware security module, but I believe that once DIT is going to do it, then we are going to piggyback on that. And it has also successfully cleared the Aadhaar compliance audit by agency appointed by the DIT Maharashtra. Next. These are the touch points where the farmer is using the Aadhaar ecosystem. The first is, of course, for registration itself. The second is that after he has registered, so he is making application through his Aadhaar number. It is processed end to end, right from application. We have defined the desks. It's a more delegated system, and within that, all approvals are happening. SMSs are being sent to him. He is being informed about each and every stage. So the entire process of chasing files, which often happens in the system, is now not necessary at all, and which is leading to a great response from the, once this system was set up, I think after the second year of the project, the response has been ever increasing, and in fact now very soon we'll be running out of the budget, and this is something where we have to, where the response has been quite substantive. The payment request also, that is post completion of work, because this is a project where back-end subsidy is involved, where the person is first doing the work and thereafter we are paying him the subsidy amount. So the payment request is also through the through his Aadhaar number only, and the payment disbursement is through the Aadhaar enabled payment system through DBT, and all payments for individual beneficiaries are through that. The only place where we are not right now paying through DBT is for community works, where the vendor is doing the community works through a tender by the agricultural department. Next. So this is something which of course have been covered in the
original slides, that the ease of this entire process is that we are not doing mistakes in typing of names, errors in the spellings of names and other things, which since we are hitting Aadhaar databases, so there is no issues of a lot of data to be managed, which is the obvious advantage of Aadhaar. Next. So this is, I think, in short, what we have managed to do. I think Agriculture Department is also trying to take up a whole lot of these issues from the other districts apart from the 16 districts where POCRA is operable. If any questions are there, I will be happy to entertain. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, sir. But I think POCRA is the most IT savvy department or the project. Everything, not only Aadhaar, but the use of GIS, use of the whole thing. It is one thing which actually tells how the new project should be implemented. The GIS use also is a real eye-opener, the way it has been done. Since inception, it's been completely IT. Thank you so much, sir. Now I request Shri Vijay Wagmare, Secretary from Food and Civil Supplies, to share his views. Good afternoon. It's indeed a great pleasure because it was in 2010, I think, as collectors, we started this initiative of Aadhaar, जब 0% था Aadhaar India में, and we thought कि पता नहीं इसका क्या होगा. And here we are discussing, actually presenting a use case 12 years after about a department PDS. Can I have the next slide? Because the kind of expanse, I usually ask this, कि कोविड के पीरियड में सब लोग कोविड वॉरियर्स करके नर्सेस एंड बाकी लोगों को बहुत अपलोड करते हैं, बट नोबडी अपलोड्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विच एक्चुअली कैटर टू 70% ऑफ द पॉपुलेशन साइलेंटली. So this is the kind of expanse that we have. 1.6 or 1.7 crore हमारे राशन कार्ड्स है और अराउंड 7.5 crore हमारे बेनिफिशरीज है जिनके लिए हम सर्विसेज देते हैं. इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी हम इसका लाभ देते हैं. अराउंड 40 लाख फार्मर्स है जो APL कैटेगरी के हैं, जहाँ पे हम सुसाइड प्रोन एरियाज हम कहते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसका लाभ देते हैं. द काइंड ऑफ बेनिफिट इज़ नॉट 3 रुपीज़ पर kg एंड 2 रुपीज़ पर kg के जो फूड ग्रेन्स है वो हम सप्लाई करते हैं. दिस डिपार्टमेंट हैज़ बीन known for all kinds of things except for food grains distribution, but thanks to Aadhaar, I think most of the things have become very transparent. As far as the kerosene thing is, I think concerned, as collectors we used to be very, it was very popular for us to be having a supervision and control mechanism. Like kerosene is a thing of past, so we will not be talking about that. Next slide, please. So this is how we use it. One is for the ration card management system, where we onboard a particular person who is using a ration card, and secondly for the public distribution system. When he is onboarded and he has to lift his food grains, then he uses his thumb. मतलब वो आदमी ही उसका राशन कार्ड है जो हम कहते हैं, the man himself is the ration card. So he goes, he authenticates, and he gets whatever is the food grains that has to be lifted. तुम्हाला काय अनाउंस करायचं आहे मतलब नहीं मैं रुकूंगा सीएम के वहाँ. ओके ठीक है चालेल. आई विल कंटिन्यू मॅम. आधार एनेबल्डमध्ये आपण ऑथेंटिकेशन जे आहे, ऑथेंटिकेशन फक्त त्याच्यामध्ये करतो. फूड ग्रेन्स उचलतो त्यावेळेस तो, आणि ऑथेंटिकेशन काही एरियामध्ये स्टील वी हॅव इश्यूज लाईक अरे हां UIDAI पीपल आर ऑल्सो देअर. सो
even there are still issues, the technical issues like no network areas and all that. So we have a facility of a root nominee facility, or there are issues like Aadhaar के आपका fingerprint capture नहीं होता है. So those are the issues. And as Shravan suggested, we are also tinkering with the iris instrument, iris recognition वो हम ले रहे हैं, and face authentication उसके भी हमारे experimentation चल रहे हैं. So this is basically the framework. बहुत simple है, बहुत basic है, but लेकिन इसका impact has been huge. Next slide please. So this authentication helps at every level. Even the shop owner जब खुद का shop open करता है तो he has to use his Aadhaar. हमारे लोग भी जब authentication करते हैं और any changes करते हैं, they have to be authenticated through the Aadhaar system. So the entire operations in the system, whoever is operating at whatever level has to be Aadhaar authenticated. So you can digitally trace who did what at what time. We can actually have all the transactions at this time. आज के दिन में कितना distribution हो उसका dashboard है, is all there in the public domain. उस पे भी आपको पता, you can actually know कि कितने transactions हुए. On an average 10 lakh transactions happen. These kind of transactions happen because people are also allowed to use partly, so they can use partly. इसके अलावा another benefit is inclusion. While we were onboarding people, we found that there is something like 1 crore beneficiaries who were just not there, but they were in the system of Aadhaar, and somebody was lifting some food grains for that. And the good point is, after deleting these 1 crore beneficiaries, we could actually onboard 1 crore beneficiaries, because Government of India allows, they have a slab, hires a slab within which we can accommodate. So we can get 1 crore beneficiaries in that. Deduplication, whoever is there are duplicate entries, एक district में भी है, दूसरे district में भी है. Now this has extended across India. अब India के deduplication की process में हम अभी आए हैं. Around 4 lakh entries अभी भी है जो हमको पता है कि duplicate है, but we cannot do it immediately because then there are paper processes that have to be completed. You have to have a home visit, authentication, and get the paperwork done. And obviously the identification is there. 99.8% of our seeding. So every ration card is now seeded. Almost every ration card is seeded. So there's not at least one person from that ration card is seeded, so that we can have an authentication. And we are around 92%. That means all the beneficiaries, 7.5 crore beneficiaries का 92% लोगों का identification जो है वो आधार में हो चुका है. So because we have this framework, we are going to the next step, financial inclusion. क्योंकि हमारे 52,000 shops है, तो ये 52,000 shops will be maybe post Diwali we plan to inaugurate that. So each shop will be basically a business correspondent model. They would be serving as a micro ATM. I think I had spoken with the Commissioner ICDS also about this, and this facility can also be probably extended to the Bachat Ghats also. So cashless PDS, AEPS, I think Parimal spoke about the Aadhaar enabled payment system. So even वो दो रुपया देना है या 3 रुपया देना है, या फिर even हमारे जो fair price shops owner है जिनको पैसा देने के लिए तहसील ऑफिस आना पड़ता है, even those visits will be avoided. We are launching this ration card management system. So like the registrar office, you don't have to visit the Tehsil office even to apply for a ration card. You can apply for a ration card sitting at your home and pay for whatever you have to pay from home only. So that is also we are doing. That would be challenging. Let us see, because the kind of beneficiaries we are dealing, we feel that they may not be digitally literate. Obviously our assumptions are often misplaced. And because everybody is getting Aadhaar authenticated, we are also venturing into the blockchain system, which will help us into the supply chain management. The entire supply chain management would be based on blockchain and other authentication, which will help us track each and every vehicle and the movement of food grains. The fifth is basically culmination of all these 4 aspects. We have a next slide. So this is what we would be launching in next month. I think Honorable Prime Minister also inaugurated a similar kind of service related a few days back. So this is the kind of framework we are able to generate because of a simple Aadhaar number. So this is from Food and Civil Supplies Department. इसके अलावा
पैडी प्रोक्योरमेंट हम करते हैं, सो बड़े पैमाने पे पैडी प्रोक्योरमेंट करते हैं, अराउंड 3000 crores ऑफ पैडी वी प्रोक्योर. सो नाउ वी आर also extending this Aadhaar authentication services to all the farmers. So जो भी 7 lakh 8 lakh farmers है उनको आधार ऑथेंटिकेशन होगा. एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज हम उनको उनके लिए कोई भी फैसिलिटी करते हैं या कोई भी कंट्रोल लगाते हैं तो देर इज़ अ बैकलैश. लेकिन अगर आधार ऑथेंटिकेशन कहते हैं तो देर इज़ नो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फ्रॉम एनी साइड. सो द मोमेंट वी से आधार ऑथेंटिकेशन एवरीबडी सेज कि हाँ ठीक है सर कर लेते हैं. एंड दैट एक्चुअली इंट्रोड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर लिसनिंग. Thank you, sir. Moving to the next session of the workshop, which is related to direct benefit transfer. The process of directly transferring the subsidy amount and making the transfers directly to the account of beneficiaries rather than providing it to government offices is known as DBT. This primary aim of this DBT program is to bring transparency and terminate the pilferage from distribution of funds sponsored by central government and state government. In DBT, benefit or subsidy will be directly transferred to the citizens from various sections of society who requires help in development. I request Shri Saurabh Tiwari, Joint Secretary, DBT Mission, to further brief us on DBT mission. Good afternoon. I come from Delhi and I'm very thankful for the state of Maharashtra and UIDAI for inviting me here to interact with you. When I think of DBT, one of the prime enablers of DBT is Aadhaar. And at the risk of repetition to some of the audience, I would like to repeat again. I am reminded of what Aristotle once very famously said, that give me a lever long enough and a place to stand and I'll move the earth. So for DBT, Aadhaar does that work, that it helps us to deliver. I'm also very happy to be in Maharashtra, Mumbai being the financial capital of the country, and DBT is all finance only. So finance and technology, of course, and I think it aspires to be the fintech capital of the country as well. So I'm very happy to be here. Coming to the main topic, the direct benefit transfer mission was established in the Planning Commission in 2012, that is the Niti Aayog now, and it was transferred to Department of Expenditure in 2013, and it is now housed in the Cabinet Secretariat, given the importance and the priority that the government sees in DBT as a delivery mechanism for all the benefits that are to be given to the citizens. DBT as a delivery mechanism has come in for praise, not only from within the country. The previous speaker was just saying that अगर आधार बोलते हैं तो सब तुरंत करने को तैयार हो जाते हैं. There is no opposition within. But outside the country also, in the past fortnight or so, IMF praised DBT as a logistical marvel, and it was seen as very, very crucial for delivery of benefits to the vulnerable. David Malpass, the president of the World Bank, also has praised DBT and showed and said that it is like a model which can be emulated by other countries. So we are very proud of this delivery mechanism that we have created, and it is a common endeavor. It is not only the central government.
not only one wing of the central government, so many wings have come together, and of course the state governments in the model of cooperative federalism, just like the Aadhaar we are discussing, the enrollment process is hugely driven by the state governments. So it's something all of India can be proud of. Now, why DBT? I won't take much time because this has already been discussed. The main thing is that we should curb the pilferage, the middlemen should be removed, the beneficiary should be targeted, and the amount has to be transferred to the bank account of the individual. Now, who is the beneficiary? We all know, except for one point which I would like to emphasize. It can be a group of beneficiaries as well. Usually when we think of DBT, we think of an individual beneficiary. So it can be a group of beneficiary like a self-help group. Of course, it can't be too big, otherwise the scheme MIS would get very, very distorted. But for small self-help groups, etc., the DBT mode can be used. In cash DBT, we are all aware. I would just like to stress DBT in kind, because most of even government officers, government departments, whenever they are assessing a scheme for DBT applicability, they sometimes think that this is a kind scheme and therefore it doesn't come within the purview of DBT. I would like to emphasize that in-kind DBT schemes are the biggest DBT schemes which we are administering today, especially the PDS, which was just dwelt upon by the previous speaker. Fertilizer is another big PDS scheme with a budget of around 85,000 crores. So these schemes also come within the purview of DBT. Next slide, please. Now, what are the legal provisions and how Aadhaar is to be used for DBT? Section 744B2, Section 47, this has already been discussed in the previous presentation by the UIDI. But one thing I would like to emphasize here is that Section 7, it lies somewhere between the voluntary and the mandatory. And there was a gray area as to whether someone who does not come with Aadhaar, who has not been assigned an Aadhaar, can the benefits be denied to that person. Recently, I am very thankful to UIDI that they have come up with a clarification on 11th of August, which says that if the benefit is in the form, if Aadhaar is used for delivery of government benefit, in that case, either the Aadhaar number should be produced, or in the alternative, proof of having enrolled for Aadhaar is required. So this gray area has now been clarified, and given that we have more than 100%, around 100% Aadhaar saturation for the adult population of the country, there shouldn't be any problems. And if there are any problems, we saw in the previous presentations how Aadhaar enrollment is being driven by UIDI and the state governments. At least there would be an enrollment point available in every block, taluka, or tehsil, as whatever name we call it, so that those who want to bypass the system by not producing an Aadhaar are forced to at least enroll for Aadhaar. So that is one point which I wanted to emphasize. Next slide, please. Now, benefits of Aadhaar-based DBT, I would like to emphasize on the first 2 points together. Aadhaar gives you an identity which scores over other identities as proof of identification, in the sense that it is very cost effective, it's very time effective, and being a 130 crore database, the amount and the deduplication that you can do using Aadhaar is tremendous. For Aadhaar authentication, as we see, the time taken for the authentication to take place is less than a second usually. The cost is, we have seen for government departments, it's free, otherwise it's 50 paisa or 1 rupee for telecom operators, so the minimal cost. And the most important fact, that if you were using some other identity, it would have been impossible to deduplicate,
Suppose you were using PAN or ration card or whatever other proof of identity you take, to get the deduplication done would have been impossible in terms of both cost and in terms of an effective deduplication. So this is what Aadhaar achieves. So that gives the pivot for DBT schemes. It acts as a financial address. We have seen in the previous presentations also how for the Pokrai scheme around 70% of the payment was made through Aadhaar as a financial address. We'll be coming to that slide a little later, and I think there's a full presentation from NPCI, so they will give you the full details. It also ensures greater inclusion and ease of availing service. So earlier, when Aadhaar was launched and when DBT schemes were launched, the focus was that no one should be excluded. The fear of exclusion, the error of exclusion was a main focus point. And in the city of Mumbai itself, I remember CEO UIDAI, he was addressing the global fintech meet. And during that, he said that now Aadhaar is a means of, a tool of inclusion rather than a tool, something which we feared that we would be excluded. So that speaks volumes of how Aadhaar can be used. And then the very important issue is that all these, whether it is Aadhaar, whether it's technology, whether it's UPI, whatever we call it, the focus has to be how the individual who is applying, the beneficiary in the case of a DBT scheme, how she is going to have a great experience. So Aadhaar gives that great experience because, as we will see, the schemes can be designed, the workflow can be designed in such a manner that those who are coming with Aadhaar, they get a very good experience. And those who are coming without Aadhaar, because there is a certain doubt about their identity, they go through a more rigorous process of application, of verification, and that makes their life perhaps a little more difficult. So with this Aadhaar we can use as making the life of the citizen easy. Verification eligibility determination mechanism, I have detailed slides, so we'll take it at that time. And efficiency and effectiveness, of course, that they are the key points. Next slide, please. So this is how Aadhaar seeding and authentication has progressed. You see 16-17 it was around 78%, but due to various reasons including some interim Supreme Court orders, the requirement of Aadhaar data vault, the percentage came down to around 60 to 66% from 17-18 to 20-21. Now it is again picking up at 73.7%. And given the recent clarifications, the recent focus on Aadhaar enrollment, I am sure that this number would go up further. Next. This is our journey. You see the green graph on the left. The total cumulative DBT transfers, they have been constantly rising. 2021 and 21-22, the biggest bars, they also represent the COVID period where a lot of, where DBT was used as a tool in giving a lot of benefits to the poor and the vulnerable in the country. 20 to 23 is just maybe 5 months, 6 months data, therefore the bar is lesser. It may, we project it to reach at 5 lakh crores. The total amount that we have transferred is 25 lakh crores for central and centrally sponsored schemes. And the beneficiaries also, the right hand infograph, it also shows a constant increase. 180 crores was the highest that we reached again during the pandemic period. Of course, this is a non-cumulative number, so if someone is getting 2 benefits, for instance, a scholarship also and a beneficiary of, say, PDS also, so that person would be counted twice, not once. Next slide. This is the details of what has accrued to the public exchequer
in real terms because of DBT. So the total savings that we have made on account of DBT is around 2.25 lakh crore rupees since the inception. And the bulk of it comes from PDS, from PAHAL, from Manrega, from fertilizer subsidy and so on. So this is the savings that have been made by usually deleting ghost beneficiaries, by deduplication, by better targeting. Maharashtra has not reported savings for 2021, so this I would request if the concerned officers are here to help us with those savings. Next slide. Now, how do we identify a DBT scheme? Why I am taking this slide is because it has been the endeavor of the government that all the state DBT schemes which are beneficiary oriented, they should be examined from a DBT perspective and identified as a DBT scheme if they so qualify. So towards this end, the Honorable Home Minister has also taken up this matter in the zonal interstate council meetings, and where the chief ministers were also present. So for this we have requested the states, so please examine your DBT schemes from these perspectives. One is whether it is funded from the consolidated fund of the state or not. If it is cash in kind that we have already discussed, please take in-kind schemes also into consideration. If it can be notified under the Section 7 of the Aadhaar Act, if it is a DBT scheme. The other sections we have already discussed. And the two important things is that if it is a cash scheme, the money should be directly transferred to the bank account of the individual. And in-kind scheme, if it is identified, then the benefit would be counted as DBT only if at the time of delivery of benefit, the beneficiary is Aadhaar authenticated. For instance, we saw in the case of PDS in the previous presentation, when the ration is actually delivered to the beneficiary at the ration card shop, the beneficiary has to authenticate herself. Only then it would be counted as DBT, otherwise not. Next. So the first part I have already discussed. In July 22, we had requested all the state chief secretaries and the DBT cell coordinators to review them, and we have held a number of meetings also, including some on video conference. As far as state of Maharashtra is concerned, 67 schemes are onboarded on the DBT Bharat portal, but the total number of beneficiary oriented schemes that has not been communicated as yet. So I'd request that this may be made available at the earliest. Next. Now, what are some of the good practices for use of Aadhaar in DBT schemes? So one is to design your workflow in such a manner so that you incentivize the Aadhaar usage. For instance, we have all come across during the pandemic, most of us have got tested for the virus, some people about twice, thrice also. So when the person who came to collect the sample, it depended upon the type of question that was asked as proof of identity. If the question was that, please give me your Aadhaar, then the probability of producing an Aadhaar, given that we have almost 100% saturation at 18 plus age, was very high. But if the same question was addressed differently, that give me any identity proof, or out of these 8 give any one, the probability of getting an Aadhaar would be much lesser. So the workflow should be designed in such a manner that Aadhaar is incentivized. For instance, if it is an online system, the first entry could be that please give your Aadhaar number. In case you don't have an Aadhaar number, please give your Aadhaar enrollment ID. In case you don't have your Aadhaar enrollment ID, these are the places where you can go and enroll for Aadhaar and give the Aadhaar enrollment ID. If
the Aadhaar number is given, if eKYC is done, there could be an auto-population of various fields. We saw in the previous presentation, the demographic data can be pulled during eKYC, it can be auto-populated. So, it works both ways. The life of the citizen is also getting easy. She gives just the Aadhaar and everything is auto-populated. The other thing is that your system becomes more robust also. So it serves a dual purpose. So this we call nudging. So nudge people to use Aadhaar, and those who don't come with Aadhaar make their lives more difficult. Ask them to give more and more documents in order to support that's your choice. Just a minute, huh? Just a minute. Let me, sir, वेलकम सर. सर हमारे पास आज जो है सर डीबीटी का एक वर्कशॉप, नॉट डीबीटी का सर, आधार का एक वर्कशॉप चल रहा है. आधार का वर्कशॉप जो है सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे एक सब स्टेट्स का किया था, और आधार 2.0 के अंदर उन्होंने ये भी डिसाइड किया था कि हर स्टेट में जाके करेंगे सर. तो सर आज का जो वर्कशॉप है इसका बेसिक जो 2-3 ऑब्जेक्टिव है सर. पहला ऑब्जेक्टिव तो है कि जो भी अपने आधार के इकोसिस्टम में जो बदल हुए हैं वो पूरे हर अपने अधिकारियों को, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को समझ में आए. दूसरे सर जो कई इसके यूज़ केसेस है, स्पेशली डीबीटी और ये, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी बढ़े और इसका यूज़ बढ़े सर. अपने यहाँ पे फ़िलहाल जो 2-3 इशू है, तो नंबर 1 जो भी अपने पास 18+ जो एज ग्रुप है उसका अपना 98% प्लस आधा इनरोलमेंट है, लेकिन 0 to 5 और 5 to 18 इसमें अपने को थोड़ा काम करना बाकी है. तो सर एक तो ये करना है कि अपने को इनरोलमेंट 100% करना एक दूसरा इशू है. दूसरा सर जितने स्कीम्स हैं कि जैसे कैबिनेट ने डिसाइड किया है उसका डीबीटी जो करना है, तो इसको करने के लिए जो भी टूल्स लगेंगे, इकोसिस्टम है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर जो डीबीटी सेल है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर में अब आ गया है. पहले एक्सपेंडिचर में था, लेकिन अब उसको इम्पोर्टेंस देके 100% स्कीम विच कैन बी मेड डीबीटी शुड बी मेड डीबीटी इस पॉलिसी के अंदर में. तो अभी जो जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं कि इन कैबिनेट सेक्रेटरीट एज ए इंचार्ज ऑफ डीबीटी मिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही वॉज प्रेजेंटिंग सर. इसके पहले सर आधार में अपना इकोसिस्टम और जो नए चेंजेस आए हैं सर, जो नए गुड गवर्नेंस के रूल्स आए हैं, कुछ फंडामेंटल चेंज हुआ है. जैसे सर कि पहले हर डिपार्टमेंट अपने आप को इंडिविजुअल कंसेंट लेता था, अभी एक डिपार्टमेंट ने कंसेंट लिया तो पूरे स्टेट गवर्नमेंट ने कंसेंट लिया, ऐसा जो एक जो समझ आई है. सो नॉट एवरी डिपार्टमेंट नीड टू इंडिविजुअली टेक ए कंसेंट एंड वी शुड गो एंड नोटिफाई द स्कीम्स एट वन गो. ये जो बेसिक फंडामेंटल बदल हो रहे हैं सर. फिर सर CEO UIDAI के डॉक्टर गर्ग जी खुद आए हैं. तो सर असली में उनका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव था वो सर हमने जब आप आएंगे तो उसके बाद वो कहेंगे. तो सर आपकी यदि रिक्वेस्ट रही तो जो डीबीटी का लास्ट बचा है तो ये ख़त्म करते हैं सर. उसके बाद मैं गर्ग जी से जो CEO है उनसे करेंगे सर. उसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो है तो विल टेक एज लिटिल टाइम एज पॉसिबल सर. दिस 3 थिंग्स आपके प्रेजेंस में करते हैं, देन विल कंटिन्यू सर. नमस्कार सर, आपकी इजाज़त से स्टार्ट करते हैं सर. तो हम सर बता रहे थे कि डीबीटी की क्या अच्छी प्रैक्टिस हो सकती हैं. तो उसमें ये बता रहे थे कि जो वर्क फ्लो है उसको ऐसे डिज़ाइन करें जिससे जो है आधार लिया जा सके. आधार क्यों लिया जा सके? क्योंकि उससे बढ़िया जो है आइडेंटिफाई करने के लिए और डी डुप्लीकेट करने के लिए कोई साधन नहीं है. और इसको इस तरह से किया जा सकता है जिसमें जो है जो आधार के साथ आते हैं उनका जीवन जो है बहुत सुखद हो जाए. बहुत कुछ जो उनकी एप्लीकेशन में आपको एंट्रीज चाहिए वो सीधे आधार के डेटाबेस से ही आ जाती हैं. जैसे उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी आयु, उसका तो ऑटो पॉपुलेट उसका फॉर्म हो जाएगा सर. और जो आधार के बगैर आए हैं
वो क्योंकि उनके ऊपर कुछ शंका है तो उनसे और भी डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, उनकी एप्लीकेशन की और भी ज़्यादा स्क्रूटनी किया जाएगा। तो दोनों तरफ से फ़ायदा होना चाहिए। जो बोनाफाइड सिटीजन है उसको अच्छा एक्सपीरियंस मिलना चाहिए और जो सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र है उसको जो है वो और रोबस्ट और शक्तिशाली हो सकता है सर। तो जहाँ पर जो है सर बच्चे हैं उनके लिए सेक्शन 3A ऑफ द आधार एक्ट ये कहता है कि माइनर जो 18 साल से कम हैं उनका आप आधार मैंडेटरी नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में कभी हम लोग अपनी स्कीम को ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं जहाँ पर जैसे स्कॉलरशिप देनी है तो जो पेरेंट है उसको हम बेनिफिशियरी बना दें और जो पात्रता है, जो एलिजिबिलिटी है वो एक एलिजिबल बच्चे के कारण से आए तो उसमें हम उसका भी आधार ले सकते हैं। अगली स्लाइड। तो जो पूरा आधार का इकोसिस्टम है उसको सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए और कैसे जो है सिटीजन को अच्छी सुविधा मिल सके उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए। एक तो एंड टू एंड डिजिटाइजेशन होना चाहिए जिससे किसी को दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन देने की ज़रूरत ना हो। एप्लीकेशन जो है वो अपने या तो पोर्टल पर दे सके और उससे भी अच्छा है कि आज मोबाइल का युग है, मोबाइल में ही जो है सारे ऐप्स आ जाएं। एक उमंग ऐप है जिसको जो है आईटी डिपार्टमेंट जो भारत सरकार का है वो करता है। तो उस एक ऐप को डाउनलोड करने से सर जितने भी उमंग पर ऑनबोर्डेड ऐप्स हैं वो सब आ जाते हैं। तो इससे जो है बार बार अलग अलग ऐप नहीं करना पड़ेगा और आधार भी उसमें एक ऐप है जो उमंग है। तो बार बार ऐप को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, एक ही ऐप से सिटीजन अपनी सारी सुविधाएं ले सकता है। उसको जो है समय समय पर एसएमएस के द्वारा समय समय पर जहां पर उसकी कोई कमी है उसको बताना चाहिए कि जो है आपकी ये चीज़ है, आपका फॉर्म इस स्टेज पर पहुंच गया है, आपके खाते में पैसे चले गए हैं, ये सब करना जरूरी है सर। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये करने के लिए कि एंड टू एंड डिजिटाइज किया जाए इसके लिए जो है हम लोग ने सभी राज्यों से निवेदन किया। तो महाराष्ट्र में सर 66 स्कीम थी जिनको जो डीबीटी यूज़ कर रही हैं, जिसमें से सर 51 को जो है महाराष्ट्र ने आइडेंटिफाई किया एंड टू एंड डिजिटाइजेशन के लिए और उसमें जो है 51 सर्विस महा डीबीटी पोर्टल के तहत हो गई हैं और 3 स्कीम अभी बाकी हैं जिसको जो है जल्दी ही कर लिया जाएगा। 3 स्कीम्स के बस रिस्पॉन्स पेंडिंग है। 12 स्कीम्स ऐसी थी सर जो बहुत छोटी छोटी हैं या लाइफ साइकिल ख़त्म हो रही हैं तो राज्य सरकार ने उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। सर इसको तो हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा सर ये कर रहे हैं कि आधार को एक फाइनेंशियल एड्रेस के तहत यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आधार नंबर है वो बैंक अकाउंट से अगर लिंक्ड है तो खाली आधार नंबर से ही पैसे चले जाएंगे, उसमें जो है अलग से बैंक अकाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक प्रायोरिटी एरिया है और इसमें सर फेलियर बहुत कम होता है। अगर बैंक का उसका ब्रांच चेंज हो गई, खाता बंद हो गया, उसने कहीं और खोल लिया तो मर्जर ये सब का भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और इसके लिए जो है एनपीसीआई ने एक बेस नाम से यूटिलिटी भी बनाई है, भारत आधार सीडिंग इनेबलमेंट एक्सचेंज, जिसमें जो है व्यक्ति जो है ऑनलाइन जाकर ही अपने बैंक को अकाउंट से लिंक कर सकता है। पहले उसको बैंक जाना पड़ता था, तो आधार लिंकेज को और आसान कर दिया गया है सर। नेक्स्ट स्लाइड। सर ये उसका आर्किटेक्चर है कि वो आधार मैपर पर मैप करता है और उसके बाद उसके बैंक में पैसे चले जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सर एक लास्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि पहले का जो सिस्टम था उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के डॉक्यूमेंट्स थे कि फॉर इंस्टेंस अगर सर किसी को स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप के लिए पहले वो अप्लाई करेगा। अब उसको अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट को वो अपलोड करेगा। अगर उसने कोई बोर्ड पास किया है तो बोर्ड के उसको वो करेगा, अपलोड करेगा सिस्टम में। तो इतने सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना, फिर उसको वेरीफाई करना
कि जिस बोर्ड में है वहाँ पर भेजो, उसको वेरीफाई करो, जहाँ से सर्टिफिकेट दिया है उसको वेरीफाई करो। तो ये सब को दूर करने के लिए जो है, जो एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं सर, उसको भी UIDAI ने अभी हाल में ये कर दिया कि उसको भी आप आधार से नोटिफाई कर सकते हैं सेक्शन 7 में। ये 11 अगस्त को सर इसका नोटिफिकेशन निकला है। अगर एक बार ये सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने ये सारे सर्टिफिकेट्स को आधार इनेबल्ड कर देगा, तो जहाँ पर भी उसने अप्लाई किया वहाँ से सीधे वो सर्टिफिकेट ले लिया जाएगा। ना किसी जो लाभार्थी है उसको कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, जो विभाग है उसको कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सब स्वतः हो जाएगा, जिससे जो है DBT और आधार एक नेक्स्ट स्टेज पर पहुँच जाएगा सर। नेक्स्ट। और सर इसके लिए भारत सरकार ने एक इस पूरे उसको करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का एक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, और उसके लिए जो है एक स्टेट को 200 करोड़ तक मैक्सिमम मिल सकता है। महाराष्ट्र से वो प्रपोजल चला गया है, तो वो अभी सर इट इज़ अंडर प्रोसेस सर। थैंक यू सर। सुस्वागतम सर। आपल्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांचे मी तेजस्विता करवीर, कंप्लायन्स मॅनेजर ऑफ UIDAI, आमच्या UIDAIच्या CEOच्या वतीने मनापासून स्वागत करते। आय रिक्वेस्ट डॉक्टर सौरभ गर्ग, CEO ऑफ UIDAI, टू फेलिसिटेट Honorable Deputy Chief Minister श्री देवेंद्रजी फडणवीस with token of remembrance. Now may I request our CEO Dr. Saurabh Garg to brief our Deputy Chief Minister on Aadhaar ecosystem and address the gathering. Good afternoon, sir. Respected Deputy Chief Minister, officials from Government of Maharashtra and my colleagues from UIDAI. I must first of all thank the Honorable Deputy Chief Minister for taking time out and coming for this workshop. सर, इस वर्कशॉप का जो मकसद है वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT ने बोला। मैं बस 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूँगा। एक तो ये है कि पिछले 10 साल में, जब से 2010 से शुरू हुआ आधार, अब तक हम एक पड़ाव पे आ गए हैं कि 100% ऑफ अडल्ट रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया सबके पास आधार है। हमारा जो 0 to 18 एज ग्रुप है उसमें भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। महाराष्ट्र ने भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, इंटायर कंट्री में भी अच्छी प्रोग्रेस है। बट द फैक्ट कि हमारा एवरी अडल्ट रेजिडेंट जो भी 18 वर्ष से ज़्यादा है जिसकी उम्र, उसको पास आधार हो गया है, इससे वी आर एबल टू ट्रांसफॉर्म हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट प्रोग्राम्स। अभी हमने देखा PDS सेक्रेटरी PDS विजय वाघमारे बता रहे थे कि नियरली 1 करोड़ PDS बेनिफिशरीज वो इंक्लूड कर पाए आफ्टर चेकिंग अप जो गैप है बिटवीन देयर लिस्ट एंड द आधार लिस्ट। सो इन फैक्ट जो आधार हैज़ बिकम अ टूल ऑफ इंक्लूजन रादर दैन जो पहले क्रिटिसिज्म हुआ करता था कि इट इज़ अ टूल ऑफ एक्सक्लूजन। सो आधार हैज़ बिकम अ टूल ऑफ इंक्लूजन गिवन द फैक्ट कि हम इस पड़ाव पे आ गए हैं कि 100% ऑफ अडल्ट रेजिडेंट्स हैं। जो 0 to 5 और 5 to 18 पे है उस पर तेज़ी से काम चल रहा है, और हमारा यही प्रयास है अब कि कैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब दिया जाएगा उसी समय हम आधार नंबर भी दे दें, तो उससे ऑटोमेटिकली एवरी पर्सन हु इज़ यहाँ पे रेजिडेंट है उनके पास आधार होगा। हमने सर ये 10 साल का एक समीक्षा किया था पिछले साल कि आधार अगले 10 सालों में आधार को क्या करना चाहिए, आधार 2.0, और उसमें जो प्रमुख बिंदु रही है कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, कि कैसे निवासियों की जीवन में सुखद हम क्या ला सकते हैं, ईज़ ऑफ लिविंग को ऑब्जेक्टिव लेके अब हम आगे बढ़ रहे हैं इन द आधार 2.0। एंड इसमें 2-3 बिंदुएं हैं। एक तो ये है कि जो भी प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे
54 स्कीम अभी जॉइंट सेक्रेटरी डीबीटी ने बताई, 51 + 3 जो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं आउट ऑफ द 66 स्कीम्स। ये प्रयास है कि जो भी बेनिफिशरी ओरिएंटेड स्कीम है या ग्रुप ऑफ बेनिफिशरीज का है, वो अगर आधार बेस्ड हो तो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड जो बेनिफिट्स हैं, डी डुप्लीकेशन, घोस्ट बेनिफिशरीज का वो लाभ हो पाएगा। So every beneficiary oriented program should as far as possible include Aadhaar. The second is also कि आधार का पूरा लाभ तभी हम ले पाएंगे जब हम ऑथेंटिकेशन करेंगे, कि अगर वेदर फिंगरप्रिंट से हो या OTP से हो या फेस से हो, केवल आधार को पेपर बेस पे कलेक्ट करने से कुछ लाभ हम पाते हैं, बट वो ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन जरूर चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द स्कीम्स आर डूइंग दैट। ये हमारा सेकंड प्रयास है कि इसका फिर फुल बेनिफिट आधार का लोगों को भी होगा और सरकार को भी होगा। जो सेविंग्स का बताया था अभी डीबीटी में करीब 2.5 लाख करोड़ सेविंग हुई है, केवल अगर हम 4-5 स्कीम का लें कि वहाँ पे डुप्लीकेशन और घोस्ट बेनिफिशरीज हमने दूर कर पाए थे। और तीसरा हम ये भी प्रयास है कि लोगों के निज कंसेंट से, उनकी सहमति से कैसे अन्य लोग भी, अन्य संस्थान भी लाभ उठा सकें। हमारे जो आधार कार्ड है उसमें एक QR कोड होता है। QR कोड कोई भी स्मार्टफोन से आप पढ़ सकते हैं, QR कोड रीडर से, तो उससे ये वेरीफाई हो जाता है कि किसी ने कोई फोटोशॉप तो नहीं कर दिया, कोई किसी और का फोटोग्राफ ना लगा दिया हो। और ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन दरकार नहीं, आप कोई भी स्मार्टफोन से आप कर सकते हैं। तो इसका ये वेरिफिकेशन है, इससे भी लोगों का जो क्रेडिबिलिटी होगा, फेथ होगा इन द सिस्टम, एंड एनी 2 people transacting who may not be necessarily anything to do with the government, they will have better faith. So हमारा attempt है on how to ensure that there is more trust in the system, and Aadhaar is a very important focus for that. बहुत अन्य changes हम ला रहे हैं system में, but one of the major attempts is that in every stage we want greater involvement of the state government, and we have also created district level Aadhaar monitoring committees, so that in the next decade Aadhaar can become much more closely intertwined with the different development schemes that are being run, whether by the government of India or the state government, and the credibility of Aadhaar will be enhanced when both state government, district administration and government of India are all together fully involved. तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, हमारी वर्कशॉप में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतने सीनियर सेक्रेटरीज प्रेजेंट हैं and the kind of presentations that have been made. So once again, thank you for coming for this. Thank you, sir, for sharing your vision and expectations from this workshop. Now I request Shri Aseem Gupta, Principal Secretary, Government of Maharashtra, to share his views and address the gathering. Can you put the presentation? सर वेरी क्विकली सर, अपने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की आज की स्टेटस क्या है और जो भी चेंजेस हुए हैं उसको हम आगे कैसे लेके जाना चाहिए, इसके बारे में सर सिर्फ जस्ट 2-3 मिनट में बताता हूँ सर। सर बेसिकली 3 ही पॉइंट के बारे में बताएंगे सर। पहला, आधार इनरोलमेंट की अपनी स्टेटस क्या है, इनरोलमेंट के साथ साथ सर अपडेशन भी, क्योंकि जिसने पहले 10 साल पहले लिया था उसके काफ़ी चीज़ें भी अपडेट 10 साल में, उसका एड्रेस चेंज हुआ होगा, कुछ चीज़ें चेंज हो गई, मोबाइल भी शायद चेंज हुआ हो, उसका अपडेशन जो है सर, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हम हर अपडेट 100% अपडेट कर ले, विच इज़ अ ह्यूज टास्क, लाइक गोइंग टू ऑलमोस्ट 11 करोड़ पीपल एंड गेटिंग दैट अपडेटेड। पर सर तो आधार इनरोलमेंट डीबीटी के लिए हमने क्या किया है, कैबिनेट ने क्या निर्णय लिया है, और सर आधार डाटा वॉल्ट जो है वो उससे ही रिलेटेड जो उन्होंने अभी जैसे सीओ साहब ने कहा, हर स्टेट ये कर रही है सर कि लोगों को एप्लीकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, इस चीज़ को ख़त्म करके आधार के बेसिस पे यदि अपन जैसे आपने परिवार पहचान पत्र के लिए हमको हरियाणा भेजा था, अभी जो गोल्डन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम खुद लोगों को अप्रोच करें और एप्लीकेशन की ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ फंडामेंटल कि अब वो हमको अप्रोच ना करें, हम उनको अप्रोच करें। ये 3 चीज़ों के ऊपर सर जल्दी से बताता हूँ सर।
सर आधार एनरोलमेंट की पोजीशन ऐसी है सर कि अपना 18 ईयर्स के ऊपर का ठीक है, इट शुड ऑल्सो, इसमें भी कुछ बचे हुए हैं सर, पर मेन जो है सर कि 5 जो 0 to 5 वाला है सर, इसमें लगभग 50 लाख बच्चे जो हैं इनका एनरोलमेंट नहीं हुआ है सर। एक इशू ऐसा है कि 1 जनवरी से, जहाँ तक मेरी समझ है, इसके इनरोलमेंट के रूल्स बदल रहे हैं। रूल्स मतलब सर आज हर कोई ऑपरेटर, अपने पास 7,000 ऑपरेटर जो हैं हर कोई इनरोल कर सकता है, लेकिन शायद 1 जनवरी के बाद इनरोलमेंट की जो इनरोलमेंट करने वाले सेंटर्स की संख्या हर डिस्ट्रिक्ट में 10, 12, 5, 6, 7, 8 के आसपास आ जाएगी सर। किसी भी हालत में 1 जनवरी के पहले हमें इनरोलमेंट 99% तक पूर्ण करने हैं। इसके लिए जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर हैं, स्पेशली वुमेन एंड चाइल्ड 0 to 5 के लिए, और सर पब्लिक हेल्थ को जो सिस्टम बैठाना है कि जैसे बच्चे की पैदाइश हुई वैसे ही उसका आधार ये हो जाए, तो 31 दिसंबर तक कैंप मोड पे सर आंगनवाड़ी में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट्स में, हेल्थ सेंटर्स में कैंप्स लेके हमें ये चीज़ प्रैक्टिकली इंश्योर करनी है कि ये भी हम 98-99% के ऊपर चले जाएं, क्योंकि अभी आधार नहीं रहा तो उसका अधिकार एक्चुअली थोड़ा कम हो जाता है, उसको मिलने में और मुश्किल होती है। तो आधार हैज टू बी टेकन एज ए राइट। तो ये पहला काम है सर जो हमें करना है 31 दिसंबर तक। सेकंड सर जो है सर डीबीटी के बारे में कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि हर स्कीम को डीबीटी में लेके जाने की कोशिश करनी है। एक जो बड़ी चीज़ है, हर किसी को लगता है कि डीबीटी सिर्फ पैसे की होती है, लेकिन इन काइंड में भी डीबीटी का, जैसे अभी जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने बताया उसके लिए, तो सर कैबिनेट के निर्णय से एक डीबीटी सेल बना है एसीएस फाइनेंस के अंदर में। तो हर डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट है कि 1 नवंबर तक उनकी जितनी स्कीम्स हैं उसमें से जो स्कीम्स ऑलरेडी डीबीटी है उसको छोड़ के जो डीबीटी हो सकती है उसके बारे में बताएं। जो नहीं हो सकती उसका दे शुड टेल अस कि ये नहीं हो सकती, उसका अंतिम निर्णय ये डीबीटी सेल लेगा कि ये एक्चुअली में डीबीटी हो सकती कि नहीं हो सकती है। दूसरा सर डीबीटी में एक दूसरा इशू जो अभी बहुत अच्छा सॉल्व हो गया है, पहले हर स्कीम का हम अलग अलग नोटिफिकेशन करते थे कि ये स्कीम का डीबीटी होगा, तो हर डिपार्टमेंट हमको भेजता था। अभी सर हर स्टेट ने ये शुरू किया है, और जो मैंने आपको कहा सर कि डिपार्टमेंट को कंसेंट इज़ नॉट ए कंसेंट टू वन डिपार्टमेंट बट टू स्टेट गवर्नमेंट, उसके तहत सर हम कोशिश करेंगे कि 1 नवंबर के बाद जितनी इन्फॉर्मेशन आए उसको एकत्रित करके मे बी 15-20 नवंबर तक सिंगल नोटिफिकेशन से जितनी बच्ची है वो करें। हर डिपार्टमेंट को अलग अलग नोटिफिकेशन करने की ज़रूरत न पड़े। दैट विल बी अनदर लेट्स से पॉइंट ऑफ एक्शन फॉर अस सर। तो सर ये हर डिपार्टमेंट जो यहाँ पर है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमको 1 नवंबर तक की इन्फॉर्मेशन दे, मेक इट एज एग्जॉस्टिव एज पॉसिबल, और उसके बाद अंतिम निर्णय जो है सर वो एसीएस फाइनेंस की जो सेल है वो लेगा। पर सर ये आप कैबिनेट का मैंडेट भी है, तो वी लाइक टू डू इट बाय द एंड ऑफ नवंबर। वी श्योरली वांट टू डू दिस नोटिफिकेशन। तीसरा सर जो है, गुड नेक्स्ट सर, ये चीज़ थोड़ी सी वी शुड से सॉरी टू यूआईडीआई सर। क्या है सर कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट आधार नंबर लेते हैं। आधार नंबर लेते समय 2 गलतियाँ होती हैं सर। हमने आधार नंबर लिया, लेकिन लेते समय हमने लेने के लिए लिया, उसको उस समय वेरीफाई नहीं किया। तो यू विल बी सरप्राइज सर, हमारा जो सेवार्थ है जिसके अंदर हम पे करते हैं लोगों को सैलरी, मुझे सैलरी सेवार्थ से मिलती है, जो शालार्थ है जिससे टीचर्स को सैलरी मिलती है, उसमें 7.5 लाख आधार में से सिर्फ 3.5 लाख आधार सही है। बाकी में से किसी ने 0000 लिख दिया, किसी ने 1111 लिख दिया। सो वी हैव टू इंश्योर कि आधार जो लेते हैं तो लेने का भी एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट से कि वी गिव एनी 12 डिजिट नंबर एंड वी विल एक्सेप्ट इट एज एन आधार। जैसे एक चीज़ है सर, एक एल्गो होता है जो 12th डिजिट होता है, दैट्स ए चेकसम। सो दिस काइंड ऑफ एल्गोज हैव टू बी यूज्ड टू इंश्योर दैट द आधार नंबर which is being input is a valid आधार नंबर। And sir, especially for government employees and teachers, we have to authenticate it. And though what I'm saying is may not be acceptable easily, and maybe, but sir, if Aadhaar is a financial address, and if the government servants cannot be examples, so we should simply say the payment of your salary would be to Aadhaar enabled payment system. And of the matter, sir, within 10 days you will see that everybody will update his Aadhaar because the salary will not come. And this is what we are asking people also to do it. Sir, आधार के बाद अकाउंट नंबर लेना, उसका IFSC कोड लेना, दिस और लास्ट टाइम भी सर मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जब पहली बार जब फार्मर्स की डाटा एंट्री हो रही थी उनको PM किसान योजना के अंदर पैसे देने के लिए, सर 80 लाख के आसपास की एंट्री में से 56 लाख एंट्री में गलती हुई थी।
रिजेक्ट होके आया था, क्योंकि सर इतना 16 डिजिट का नंबर होता है आपका अकाउंट नंबर, और उसमें कहीं ना कहीं गलती होती है, इनपुट करने में कहीं ना कहीं होती है. यदि मेरे पास आधार नंबर है तो वी शुड नॉट बी आस्किंग फॉर ए अकाउंट नंबर. तो सर दिस इज one problem which we are facing, ki Aadhaar is not validated when taken, so we have to do that. Second thing is, sir, this is actually we are on the little on the wrong side of law. Aadhaar number should not be stored anywhere but in an Aadhaar vault. बट सर मेरा खुद का एग्जांपल था, हमारा आरएनआर डिपार्टमेंट ने, हमने 2 लाख जिनमें कोरोना की डेथ हुई थी, हमने सबको एईपीएस से हमने 50,000 रुपये दिया, 1,000 करोड़ रुपये सर अपन ने दिए. पर सर आधार नंबर्स आर नॉट स्टोर्ड इन आधार वॉल्ट. So sir, we must necessarily go to Aadhaar vault because we are on the wrong side of the law and we have been living dangerously कि अभी इसमें से कोई भी आधार का जो नंबर्स है इसके पे कोई अटैक नहीं आया है, इसका कोई मतलब हैक नहीं हुआ है. तो सर एवरी डिपार्टमेंट मस्ट रियलाइज दैट आफ्टर 1st of January, by 1st of January we would ensure कि there is an Aadhaar vault of government of Maharashtra. This is our fault, मतलब IT department should have done it by now. But every department must ensure that there is no Aadhaar number stored outside Aadhaar vault. This is our another major action point which we must receive. Sir, इससे पॉजिटिव जो चीज़ जो हो रही है, हरियाणा का एग्जांपल देखा और जो हम कर रहे हैं सर, आधार वॉल्ट में जब आधार जाएगा तो because Aadhaar number cannot be stored outside, we will generate one Maha ID for every Aadhaar number 1:1. This Maha ID would be stored outside. So this would ensure there is a single sign on. एक व्यक्ति को, आज से एक सिटीजन को हम 5-6 सिस्टम में हर बार अलग अलग डाटा एंट्री कराते हैं, तो सिंगल साइन ऑन कैन बी अचीव through Maha ID, and that is what is the concept behind the golden record. We are just calling it Maha ID because that rhymes with our state's name. And sir, इसके बाद जो Maha ID है, that will become the focal point for our what you call unified citizen data hub. So आधार में सिर्फ डेमोग्राफीज हैं, मेरा एज है, मेरा मतलब मेरा सेक्स है, मेरा एड्रेस है, बट अदर थिंग्स आर नॉट देयर. सो दिस महा आईडी वुड गेट अदर डाटा आल्सो इंक्लूडेड. इनऑर्गेनिकली अपने पास ऑलरेडी बहुत डाटा है सर, एंड ऑर्गेनिकली. तो इसमें ऐसा होगा सर कि महा आईडी के जो हम सिटीजन को डैशबोर्ड देंगे, उसमें ऑल द इंटरेक्शन दैट ही हैज़ हैड विद द गवर्नमेंट वुड बी सीन. ऑल द मनी विच इज सर, एक कभी कभी डर लगता है सर, क्योंकि कोरोना में बहुत देखा, पता चला कि मेरे आधार नंबर के ऊपर 100 RT-PCR की रिपोर्ट जनरेट हुई है, क्योंकि उस समय एक कोई तो आधार नंबर देना है तो किसी के भी आधार नंबर देते थे. तो सर मुझे पता होना चाहिए कि मेरा आधार नंबर कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है. तो आई वुड कम टू नो लॉग ऑफ ऑल माई इंटरेक्शन विद स्टेट गवर्नमेंट. एंड सर इसके बाद व्हाट वी कॉल्ड एविडेंस प्लानिंग. यदि आप कोई भी स्कीम गवर्नमेंट को करनी है तो ये सिटीजन डाटा हब बताएगा कि इसमें कितने लोग एलिजिबल हो जाएंगे यदि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं तो. एंड लास्टली सर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यदि कोई व्यक्ति कल 65 का हो गया, सिटीजन डाटा हब को पता है, तो गवर्नमेंट का उसको SMS जाएगा कि यू हैव बिकम एलिजिबल फॉर दिस पेंशन स्कीम. यू जस्ट से यस और नो, बिकॉज विदाउट कंसेंट वी कांट गिव. एज सुन एज ही सेज यस, so we say your and money will start getting transferred to his account number. So no need for application. We say that you are eligible. We approach and say, and one of the thing in the dashboard would be ki all the scheme for which you are eligible, and the only thing he needs to do is just say whether he is willing to take that. Because many times like if you're better off, you may say कि मैं 250 रुपये 1000 रुपये पर मंथ नहीं लूँगा एज ए पेंशन. सो ओनली थिंग यू नीड टू से इज कंसेंट. सो द होल गवर्नेंस मॉडल विल चेंज फ्रॉम एप्लीकेशन टू सेइंग यस. सो दिस इज द फ्यूचर पाथ विच वी वांट टू टेक. दिस नेक्स्ट स्लाइड and the next one. So this is basically the plan. We'll make the other data vault, we'll go to single sign on, and then we'll go to unified citizen data hub. Sir, I would really, from the IT department's point of view, I would like to commit to you first May date for unified citizen data hub, because that's our Maharashtra day. Single sign on will try to start from 1st of April, and sir, Aadhaar data vault will try to start from 1st of January. This is what we will run for, and all the departments are requested to help us achieve this slightly ambitious but very, very desirable timelines. Thank you, sir. And, sir, can I request you now to give us...
थैंक यू। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज का ये सारा इंटरेक्शन हम लोग कर रहे हैं और मैं यूआईडीआई के हमारे सीईओ साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में आधार ने एक शेप लिया है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही मतलब जैसा उसका नाम यूनिक आईडी है वैसा वो दैट हैज़ बिकम अ रियल यूनिक आईडी। और लोग, दुनिया के लोग भी आज ये मानते हैं कि जो रोबस्ट सिस्टम आधार की भारत ने तैयार की है वो अपने आप में बहुत ही यूनिक है, लुकिंग एट आवर पॉपुलेशन। और उसका बहुत अच्छे से हम लोगों ने यूसेज भी शुरू किया है और अब हम वी आर ट्राइंग टू रीच द नेक्स्ट लेवल। और नेक्स्ट लेवल में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो डेटा क्लीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने जिस समय ये सारा आधार का ड्राइव लिया है उस समय डेटा क्लीनिंग की कोई बहुत प्रोसेस हमारे पास नहीं थी। हम लोगों ने या कोई स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स भी उसमें नहीं थे, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट 10 to 15% ऑफ द डेटा में भी फेक और गलत लोगों के हाथ में गया होगा, तो वो हम लोगों को करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि नाउ द डेटा शुड टॉक टू ईच अदर, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद हम लोग वही करना चाहते हैं, क्योंकि आज सारे डिपार्टमेंट्स, दिस 65 स्कीम्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, नो स्कीम बेनिफिशियरी टॉक्स टू द अदर स्कीम बेनिफिशियरी। तो ये सारा डेटा साइलो में हमारे पास आज है, तो इसको हमको ऑटो पायलट मोड पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो आपने अभी आपके प्रेजेंटेशन में भी वो बात आई है। और मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन वी विल बी एबल टू डू दैट, तो आज जैसे हमने पिल्फरेजेस बहुत बड़े पैमाने पर आधार का इस्तेमाल करके और डीबीटी का इस्तेमाल करके हमने ख़त्म किया है, लेकिन जैसे ही ये डाटा एक दूसरे से बात करना शुरू करेगा तो उससे इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो टारगेट हम लोगों ने तय किए वो हमने करने ही चाहिए, क्योंकि जैसा एक प्रकार से डेटा जैसे महत्व का है वैसे उस डेटा की सिक्योरिटी भी बहुत महत्व की है। और आजकल जैसा हम लोग जानते हैं, मैं तो होम मिनिस्टर भी हूँ, तो अभी गृह मंत्रालय को धीरे धीरे चोर पकड़ना नहीं पड़ेगा, उनको तो साइबर चोरी पकड़ना पड़ेगा। अभी तो स्ट्रीट पे कोई चोरी, धीरे धीरे स्ट्रीट क्राइम ख़त्म हो जाएगा एंड देयर विल बी ओनली साइबर क्राइम। आज हम देखते हैं कि विशेष रूप से आइडेंटिटी थेफ्ट है, बहुत बड़े पैमाने पर उसके माध्यम से घोस्ट बेनिफिशियरीज है, ऐसे कई चीज़ें हो रही है। तो उसके लिए एक रोबस्ट सिस्टम हम लोगों को तैयार करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि वंस वी क्रिएट दिस वॉल्ट और इसको हम लोग एक डेटा एक बार एक दूसरे से बात करना शुरू करेगा तो इसमें भी हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि हम लोग सैंपल के तौर पर एक बड़ा सैंपल लेकर हम लोग एक बार डेटा का हमारे ऑथेंटिकेशन करें, हमारे जो आधार कार्ड से उसका एक बार ऑथेंटिकेशन हम लोग करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी हम लोगों ने करना चाहिए कि एक उसका सैंपल साइज तय करके ब्लॉक लेवल में करना है, गांव में करना है, कहाँ करना है, पर एक थोड़ा अलग टाइप का एक सैंपल तैयार करके हम लोग अगर एक बार वो भी एक एक्सरसाइज हाथ में ले ले तो हमारे ध्यान में आएगा कि डेटा क्लीनिंग करना कितना ज़रूरी है, या किस प्रकार से ये जो आधार हम लोगों ने यूनिक आईडी जो इशू किया है उसमें विदर देर आर फेक आईडीज़, विदर लोगों ने उसका गैर इस्तेमाल किया है। तो मुझे लगता है ये अगर हम लोग कर पाएंगे तो निश्चित ही बहुत फ़ायदा होगा। वैसे भी महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने देखा कि जैसा फूड एंड सिविल सप्लाईज सेक्रेटरी ने बताया कि बहुत इसका फ़ायदा हमको हुआ है। जैसे हम लोगों ने, मुझे याद है उस समय करीब 98 लाख रेशन कार्ड जो है ये आधार से लिंक नहीं हो पाए, क्योंकि देवर घोस्ट कार्ड, वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। तो उसके कारण जो हम लोगों को 7 करोड़ की लिमिट थी उसमें 1 करोड़ का एक स्पेस मिल गया।
तो जो लोग वेटिंग में थे उन लोगों को हम एडजस्ट कर पाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इसका फ़ायदा है। हम लोगों ने पिछले समय एक वैलेट तैयार किया था स्कॉलरशिप के लिए, और ये ध्यान में आया कि इतने बड़े पैमाने पर घोस्ट स्कॉलरशिप जाती है, और वो भी बहुत पैसा, उसमें भी हम लोग करीब करीब मुझे याद है 1500-1600 करोड़ रुपए उस समय हम लोग बचा पाए। तो ये सारी चीज़ें जितना हम इसको इंटीग्रेट करते जाएंगे उसका उतना फ़ायदा होगा। और जैसा पहले भी आपका भी प्रेजेंटेशन में देख रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका सारा जो आर्किटेक्चर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एंड टू एंड हो। अगर हम लोग इसको एंड टू एंड नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा हमको नहीं मिलेगा। तो मैं ये विश्वास व्यक्त करता हूँ कि पिछले समय व्हेन द आधार स्टार्टेड, तो हम लोग बहुत उसमें पायनियर थे। महाराष्ट्र, हम लोगों ने सारी स्कीम्स डीबीटी पर लाने का काम हमने उस समय किया, और आधार का ऑथेंटिकेशन उस समय बहुत फास्ट हम लोगों ने किया। तो अब ये जो हमारी सारी प्रोसेसेस है, जिसको हम शायद आधार 2.0 कहेंगे, इसमें भी महाराष्ट्र शुड बी पायनियर। हम लोग वी शुड बी द फर्स्ट। हम लोगों ने इसमें बिल्कुल पहल लेनी चाहिए। और चूँकि हमारा डिजिटल पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा लेते हुए हम लोग जितने फास्ट इसको कर पाए, जितने जल्दी इसको कर पाए, तो हम करने का प्रयास करेंगे। मैं भारत सरकार का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी जो महाराष्ट्र की टीम है ये बिल्कुल ताकत के साथ इसमें उतरेगी, और हम लोग निश्चित ही जो प्रधानमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर, तुम्ही दिलेले मार्गदर्शन, तुमची सहमती आणि सर कैन आई कंटिन्यू? माननीय उपमुख्यमंत्री यांनी दिलेले मार्गदर्शन, त्यांनी दर्शवलेली सहमती आणि त्यांचे खंबीर पाठबळ यामुळे आपला महाराष्ट्र नक्कीच आधार सॅच्युरेशन आणि ऑथेंटिकेशन क्षेत्रात अग्रेसर राहील यात शंकाच नाही. थँक्यू. Now, let us carry forward a further session. There are various activities running across India on Aadhaar enrollment and update. States are using authentication to bring transparency in DBT to residents and to digitize the long and lengthy process of various applications under good governance. Aadhaar Usage Division of UIDAI is responsible for policies related to new initiative and represent India across the globe by sharing the best practices of unique identities with other countries. To share Aadhaar usage pan-India perspective, I call Shri Amod Kumar, the DDG Aadhaar Usage Division Headquarters, UIDAI. थैंक यू। आज की काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं मेरे प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, फिर भी मैं जो मुख्य बातें हैं वो शेयर करना चाहूँगा। और लंच में भी विलम्ब हो रहा है, आप सब लोगों को उसमें भी जाना है। तो आधार, जैसा आप जानते हैं, आधार इज़ फाउंडेशन, इट इज़ अ फाउंडेशन, नींव है ये एक बिल्डिंग की। आप अगर इसको एक देखें तो इस नींव पे क्या क्या बनाया जा सकता है। और अब जैसा पहले के सेशंस में शेयर हो चुका है कि वो नींव जो हमें बनानी थी लगभग पूरी बन चुकी है। आज जब हमने एनरोलमेंट पूरा कर लिया है और हमारा ऑथेंटिकेशन का इकोसिस्टम पूरा बन चुका है, तो अब हमें अगली चीज़ ये देखनी है कि इस पे कौन कौन सी इमारतें बनाई जा सकती हैं। और कई इमारतें इसमें बन भी चुकी हैं,
लेकिन जो पोटेंशियल है आधार का, मुझे लगता है कि अभी हम लोग 10 से 20% तक ही पहुंच पाए हैं। अभी बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे फ़ायदे जो आधार से उठाए जा सकते हैं, हमें लेने हैं। नेक्स्ट। इसमें जो इस फाउंडेशन पे जो 3 मुख्य तरह की इमारतें बनाई जा सकती हैं, वो उसमें से एक तो है फिनटेक। जब आधार से आप किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फाइनेंशियल पेमेंट्स आसान हो जाते हैं, और वो एक सेशन एनपीसीआई का मेरे बाद कवर होगा जिसमें कि बताया जाएगा कि आधार से कैसे फाइनेंशियल वो किया गया। दूसरा जो आधार का यूज़ है जो कि गवर्नेंस में है, वो 2 तरह के इस्तेमाल हैं, जो कि स्कीम्स के बेनिफिट्स पैसे का ट्रांसफ़र हो सकता है, और दूसरा गुड गवर्नेंस के लिए जहां पैसे का ट्रांसफ़र कोई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से इन्वॉल्व नहीं है। तो ये प्रेजेंटेशन जो है ये उस तरह की स्कीम्स के बारे में है जिसमें कि या तो पेमेंट इन्वॉल्व है या गुड गवर्नेंस से रिलेटेड कोई बेनिफिट हो रहा है। तो अब आप पहले के भी 2 प्रेजेंटेशंस में आप देख चुके हैं कि आधार की जो हमारी ऑथेंटिकेशंस हैं, रोज हम लोग 6 करोड़ ऑथेंटिकेशंस करते हैं। मतलब 6 करोड़ बार 60 मिलियन टाइम्स हम बताते हैं कि जो एक्स अपने आप को एक्स कह रहे हैं वो एक्स हैं या नहीं है। इस प्रोसेस में 150 से 200 मिली सेकेंड्स लगते हैं। अब वो जो ऑथेंटिकेशंस हो रहे हैं वो किन किन तरीकों से हो रहे हैं, और सरकार के लिए जो हमारा आधार एक्ट 2016 में बना था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद वो 2019 में फिर से अमेंड हुआ। हमारे आधार एक्ट में 4 प्रोविजंस हैं जो कि ऑथेंटिकेशन के लिए कौन कौन सी तरह से रिक्वेस्ट किए जा सकते हैं और क्या क्या प्रोविजंस से लीगली इनेबल हो सकता है ऑथेंटिकेशन। ऊपर के जो 2 आपको इसमें दिख रहे हैं, सेक्शन 47 और सेक्शन 4B1, ये दोनों आप देखेंगे कि दे आर टू बी यूज्ड बाय एन एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट। अगर किसी चीज के लिए मैंडेटरी करना है आधार को तो पार्लियामेंट एक्ट बना के मैंडेटरी कर सकती है सेक्शन 47 में, और इसके एग्जांपल्स हैं पैन और सोशल सिक्योरिटी कोड। सेक्शन 44B1 ये है कि ऑथेंटिकेशन के लिए वॉलेंटरी यूज आधार के लिए जो परमिट करना है वो भी पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकती है, और इसके एग्जांपल्स हैं ट्राई, आरबीआई, एनएचबी, सेबी, इरडा। इन 2 के अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो है सेक्शन 44B2 और सेक्शन 7। यहाँ पे जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके नोटिफिकेशंस इन 2 के अंतर्गत होंगे। सेक्शन 44B2 प्रोवाइड करता है वॉलेंटरी यूज ऑफ आधार अंडर गुड गवर्नेंस रूल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्विक रूल्स, सोशल वेलफेयर, इनोवेशन एंड नॉलेज रूल्स, जो कि that is for promotion of ease of living and enabling better access to services, जिसमें कि 92 proposals of state and central government के आ चुके हैं। ये माइटी को प्रपोजल जाता है आपके यहाँ से, माइटी हमारे इनपुट्स लेकर के नोटिफिकेशन करता है। जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 के नोटिफिकेशन के लिए जरूरी है कि जो भी इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आप खर्चा कर रहे हो और बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा जा रहा हो, उसमें आपका नोटिफिकेशन के लिए आपको कहीं और भेजना नहीं है। राज्य सरकार खुद सक्षम है इस नोटिफिकेशन को करने के लिए, और जैसे पहले भी बताया गया कि ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हर स्कीम को अलग से नोटिफाई करना होगा। आप एक नोटिफिकेशन में एक से ज़्यादा स्कीम भी कवर कर सकते हैं। और जो हमारा रीजनल ऑफिस है, सुमनेश जोशी जी और कर्नल अक्षय यादव जी बैठे हुए हैं, दे विल असिस्ट यू। जब भी किसी डिपार्टमेंट को कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन या क्वेरी हो, ये आप लोगों से आप टच में आ जाएं। दे विल हेल्प यू विद टेम्पलेट ऑफ द नोटिफिकेशन एंड व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर दैट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट। अब ये एक है जो स्कीम्स नोटिफाई डिफरेंट स्टेट्स ने की हैं। महाराष्ट्र ने 54 स्टेट्स स्कीम्स नोटिफाई की हैं, राजस्थान ने 171 की हैं। तो सारी स्टेट्स
अपने अपने हिसाब से जैसे जैसे वो अपनी स्कीम्स को में डीबीटी सिटीजन्स तक देना चाहती हैं उस तरह से नोटिफाई कर रही हैं। स्टेट की स्कीम्स को रफली 570 स्कीम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन नोटिफाइड सो फार। सेंटर की भी कई स्कीम्स नोटिफाई हो चुकी हैं। नेक्स्ट। अब ये कुछ उदाहरण हैं जो बाकी स्टेट्स में आधार को लेकर के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और जिनसे ईज ऑफ लिविंग टू द सिटीजन मिल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दो जो मेन यूजेस ऑफ आधार जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, एक तो ये है कि पैसे का ट्रांसफ़र और एक दूसरा है ईज ऑफ लिविंग। इसमें एक उड़ीसा की स्कीम अर्पणा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पीरियोडिक आइडेंटिफिकेशन एंड लाइवली डिटेक्शन ऑफ पेंशनर्स है। उड़ीसा की आपने सुना होगा कालिया स्कीम है जो काफ़ी फेमस हुई थी, उसमें यूज़ किया जा रहा है। लैंड रजिस्ट्रेशन में झारखंड भी यूज़ कर रहा है और महाराष्ट्र भी अभी जैसा बताया गया यूज़ कर रहा है। झारखंड में प्रिजनर्स से मुलाकात के लिए आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की अगेन अ वेरी फेमस स्कीम ऑफ रायतू भरोसा केंद्र, उसमें भी आधार का यूज़ किया जा रहा है। बेसिक फिलॉसफी ये है कि एक बार आपको पता चल गया कि कोई बेनिफिशियरी राम खिलावन ही राम खिलावन है। ज़्यादातर स्कीम्स में मेन हमारा ट्रस्ट जो बिल्ड होता है, जिसकी ज़रूरत होती है कि कोई देवी दीन तो राम खिलावन बल्कि स्कीम का फ़ायदा नहीं ले रहा है, तो आधार आपकी एक सबसे बड़ी मुश्किल हल कर देता है कि राम खिलावन ही राम खिलावन है, हम आपको 100 मिली सेकेंड्स में 150 मिली सेकेंड्स में बता देते हैं। और उसके जो फ़ायदे हैं और उसका स्कीम्स में इस्तेमाल है, ये आपकी क्रिएटिविटी पे निर्भर है कि आप जिस डिपार्टमेंट में भी हैं, जहाँ भी सिटीजन से इंटरेक्शन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस आपको आज काफ़ी क्लियर कर दिया गया। महाराष्ट्र का पोखरा का प्रेजेंटेशन हम लोग देख ही चुके हैं। नेक्स्ट। गुजरात में ई धारा में भी लैंड रिकॉर्ड्स में इसको यूज़ किया गया। कर्नाटका की तो आपने शायद टीम भी कर्नाटका भेजी थी जैसा बताया गया, जिसमें फ्रूट्स स्कीम है। इसके अलावा एक सुविधा स्कीम है और कर्नाटका ने कुटुंबा आईडी के लिए यूज़ किया है, जो कि खुद प्रोएक्टिवली सिटीजन तक जाने की बात हो रही है। अभी तक हम अपने नागरिकों को पहचान नहीं सकते थे, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें बुलाते थे अपने यहाँ। लेकिन आज जब हम ये कर सकते हैं तो अब हमें उनके पास जाना पड़ेगा और हम इसके माध्यम से उनके पास जा सकते हैं, उनकी कंसेंट ले सकते हैं, उनके डिटेल अपने आप उनके आधार नंबर से हमारे पास आ सकते हैं। तो हमें और कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो गैप है, जिस दिन कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कोई स्कीम अनाउंस करते हैं और उसका फ़ायदा नागरिक तक पहुंचाने में, अब आधार की वजह से हम लोग ये काम 15 दिन 1 महीने में ही कर सकते हैं, जिसके के लिए पहले 6 महीने और साल भर स्कीम को फॉर्मुलेट करने और इन सब में और सारा उसका सिस्टम बनाने में लगता था। ये महाराष्ट्र के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आधार नंबर ऑफ टीचर्स, तो इट इज़ नॉट ओनली फॉर सिटीजन्स और रेजिडेंट्स बट इट इज़ ऑल्सो फॉर आवर ओन एम्प्लॉयज़। उनके लिए भी, उनका भी यूनिक, जैसे कुछ स्टेट्स में घोस्ट एम्प्लॉयज़ भी हुआ करते थे कि एक किसी ने ट्रांसफ़र ऑर्डर, किसी टीचर ने फेक बनाया और उस ट्रांसफ़र ऑर्डर के बेसिस पे दूसरे ज़िले में ज्वाइन कर लिया और 2-2 जगह से सैलरी ले रहे हैं, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। महाराष्ट्र ने रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इसको यूज़ किया है। जीएडी में, पब्लिक सर्विस कमीशन में, इम्पर्सनेशन कंट्रोल में, रिक्रूटमेंट में, एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशंस चाहे वो 10th के या 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस हों या फिर आपके रिक्रूटमेंट के जो सिलेक्शन कमीशन के मैसिव रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे स्कैम्स, इम्पर्सनेशन और ये सब होता था। उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है और बड़े आराम से आप ये बता सकते हैं कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुआ ये वही कैंडिडेट है या उसकी जगह कोई और कैंडिडेट अपीयर हुआ।
हाउसिंग डिपार्टमेंट में, हाउसिंग अलॉटमेंट में, और जैसा महाराष्ट्र में यूज़ किया जा रहा है स्लम ड्वेलिंग में, जो उनका रिहेबिलिटेशन है, उनके ओनर का वेरिफिकेशन, इन सब में यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट, ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसका बहुत ही शॉर्ट में ये है, हम लोग हर स्टेट में वर्कशॉप्स कर रहे हैं, ना सिर्फ स्टेट्स में कर रहे हैं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी वर्कशॉप्स कर रहे हैं, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि आधार का इस्तेमाल करके ईज़ ऑफ लिविंग सिटीज़न को मिल सके। हम लोग स्टेट लेवल पे वर्कशॉप्स कर रहे हैं, 25 स्टेट्स में कर चुके हैं इसी तरह की वर्कशॉप। और जो नई चीज़ जिसका पहले भी प्रेजेंटेशन में बताया गया कि ऑफलाइन यूजेस ऑफ आधार, यदि आपको इस पूरे सिस्टम को बनाने में समय लग रहा है या नेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो एम आधार के ऐप में जो QR कोड रीडर है उससे आप किसी भी आधार को पहचान कर सकते हैं कि ये आधार PDF एडिटर से एडिटेड या फोटोशॉप्ड या कोई फर्जी आधार कार्ड तो नहीं है। बड़े आराम से किसी ने भी आपका आधार दिया हुआ, आप अपना एम आधार ऐप खोलें और उसके QR कोड को पढ़ के आप जान सकते हैं, उसका मोबाइल और ईमेल भी वेरीफाई कर सकते हैं। हम लोग इसको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, वो इसलिए भी प्रमोट कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ की आवश्यकता नहीं होती, सीधे आपके स्मार्टफोन से ये काम हो जाता है और कोई नोटिफिकेशन, कोई अन्य फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं होती है ये। और अगला जो हम लोग कर रहे हैं UIDAI में सैंडबॉक्स को डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि नए नए यूज़ केसेस को लोग अगर टेस्ट करना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म पे तो उनके लिए एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट आसानी से अवेलेबल रहे। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? Scale is even now available. Thank you, sir, for sharing the valuable information on Aadhaar usage pan-India and sharing the best practices of other states also. National Payment Corporation of India, NPCI, is playing the major role in achieving the direct benefit transfer in the form of subsidies and benefits directly to the Aadhaar seeded account numbers. With the help of NPCI, Maharashtra is trying to achieve 100% delivery of schemes and benefits. From NPCI, we have Shri Sudipta Nayak, who will brief us on DBT analysis and share the enhancement prospects with respect to Maharashtra state. Thank you, Tejashwita. Very good afternoon, Dr. Saurabh Garg sir and all the esteemed officials present today. Myself, Sudipta Nayak, I am from NPCI Government Relations team. Today I'll take you through a short 10-minute presentation on Aadhaar-based payments, that is Aadhaar-enabled payment system and Aadhaar payment bridge. Let me first take you to APS. Sorry. And this is a short introduction on NPCI. NPCI is the National Payment Corporation of India, and we are established in the year 2008 by RBI and IBA, Indian Banking Association. And we have some popular products such as UPI, RuPay, APS, NEFT, FASTag, etc. And today I'll be focusing on APS and APBS, and both the products have been created with support of UIDAI. Next. And this is a product, APS. It is Aadhaar enabled payment system. And this is the product where you can only use your Aadhaar number and your biometric, and you can do miracles like cash withdrawals, bank cash deposit, cash deposit, balance transfers, balance inquiry, and mini statements. Can you please play the video?
बैंक जा रहे हो? कैश विड्रॉ करने? अब बैंकिंग सर्विसेज का उपयोग करना हो गया है और भी आसान। आप AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस द्वारा बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अपने आधार नंबर और बायोमेट्रिक प्रमाण की मदद से AEPS टेक्नोलॉजी के द्वारा देश में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है। बैंक आधार नंबर और बायोमेट्रिक प्रमाण के साथ बैंकिंग और पेमेंट सेवाओं को लोगों तक पहुंचा रहा है। AEPS के द्वारा कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट जैसे अनेक बेसिक ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस या बैंक मित्रस के जरिए AEPS सुरक्षित तरह से बैंकिंग सेवाओं को आपके घर के पास पहुंचाता है। शुरुआत से लेकर अभी तक 95 से अधिक बैंक AEPS के साथ दर्ज हुए हैं। हर 6 में से एक भारतीय AEPS का लाभ उठा चुका है और 39 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले गए हैं। है ना कमाल? And on this video, I request all the Seva Kendras, matlab Maharashtra Seva Kendras should be enabled on AEPS platform, that the rural part of Maharashtra can enable this kind of service to get their benefit. Whether they are getting the direct benefit transfer, they need to run out to a bank and get the money out. If we are providing this facility on the Aadhaar Seva, matlab Seva Kendras belongs to MahaIT and Mahaonline, they can easily go to that center and withdraw money. Let me take you to the next slide. This is this is another product on Aadhaar, and this is a very robust product, and where this product is used for sending subsidies and DBTs. And if I talk about just using, government can use the Aadhaar number to send the benefits directly to the citizen's account. And on the system, almost 1,098 banks are available, and here are some transaction statistics of Pan India. Till now, almost 77,000.2 crores transactions has been transferred across India. From there, almost more than 50% till now, till date, is 30.2 crores has been transferred to APBS. Why APBS? APBS, I'll be talking to you in the next slide. Let me go to the next. Here there is a success ratio of APBS as compared to the account base and other modes of payment. The success rate is almost 99.82, which is highest in the country. Okay, if I compare to the other modes. Also, NPCI is having ACH mode, account-based mode, that is even lesser than APBS. That is 98.68. That is quite lesser than to APBS. Then I'm reiterating, department should transfer all the DBT through APBS channel for better success rate and transparency of transfers. And on this slide, I'll be talking about the Maharashtra schemes which are on DBT Mission portal as well as NPCI portal. And there are almost, if I talk about the country's number, there are 4,852 schemes. From there, 127 schemes belongs to Maharashtra. There are 59 schemes is a central sponsored schemes, and 67 schemes are state owned schemes. From 67, all have been transferred to PFMS, but as last year, there are few schemes also that are transferred to NEFT also, directly through NEFT, where ideally should be transferred through NACH, APB, yeah, ACH. I request the department to, for better success rate, it should be transferred to APBS. Can you take me to the next slide? And here are the numbers of the comparison between ACH and APB of last year, of the state of Maharashtra. Here, if I talk about the last year, the percentage of APBS was quite less. It was 8% compared to the nation standard of 50%. So this is the NPCI numbers which have been transferred to NPCI with right DBT mission code. And if you talk about this year, the percentage is quite improved. It is coming to 53%. And we proposed 100% through APBS for seamless transfer and for higher success rate. Here there are few initiatives taken by NPCI and UIDAI.
NPCI is working on new XML codes for carrying much more data and capacity on APS transactions. NPCI is doing Aadhaar-based payment workshops and also on social media and other stakeholders. Social media promotions, especially social media promotions, has been made by NPCI. And NPCI is giving free of cost Aadhaar lookup facility to the governments to check the Aadhaar before making the payment. And if I talk about UIDI, UIDI is working on the new face modality and also working day and night to make transaction much more easier, safer and reliable for the banks and citizens of the country. Can you, next slide? And here are few points. It is a support requested from the government. All Maharashtra DBT schemes should be transferred through APBS. NPCI can work with government of Maharashtra for better e-governance in the payment space. Government can take a few initiatives on district level Aadhaar awareness campaigns. All Maharashtra Seva Kendras and cash collection point should be enabled on APS. And all the Seva Kendras can avail banking facility through APS channel to facilitate the rural part of Maharashtra. Thank you. Any questions? I'm happy to comment. Actually, I was only talking about the Kotak Mahindra Bank last year only, this year April only, when I was also had a word with you regards to the Labour Rehabilitation Department scheme. That time Kotak was going to transfer to NEFT, and the consultant called me directly and asked me that whether we can do APS. Yes. But APS was like 20-25% failure. Yes, because of the Aadhaar was not seeded properly. And I also informed the data came to me, only 50,000 data came to me, where the 15,000 data is having fault. I also given them the reply. You see, on that part, sir, there is a small update that we have taken up with the Indian Banking Association, that where payments are to go or where some bank account holder is desirous of receiving a benefit, in that case, they can ask for the Aadhaar to be taken, number one, and number two, subsequently seeded on the NPCI method, so that from that side of the ecosystem also, the system is upgraded. One way is that your scheme database will call the person कि आपका आधार seeded नहीं कराया. That is one side. The other is that the bank itself can start. So that also we have to. Thank you, sir, for making this process clear for us. Now, I request Dr. Saurabh Garg, CEO of UIDAI, to kindly deliver closing address. I don't think I have anything more to say except one or two points. I would just, one, Asim, you were mentioning about from 1st January 2023 about adult enrollments. It's not that we are making the process any more difficult. We are just adding a layer of verification by the state government. So nothing, I mean, it's not that there is any change in the policy. We are just, let me just give the background of that. In last financial year, we had around 20 crore updates and enrollments. Out of the 20 crore, 16 crore were updates. That is, people were updating their mobile phone, their address. These are the two major things which normally people do, small changes in names, etc. And 4 crores were new enrollments, and out of that around 3.5 or 3.6 crore
were enrollments of children in the age group of 0 to 18. And it is but natural that when we have reached 100% enrollment of adults, the number of new enrollments last year was only 30 lakh of adults over the age of 18. So we're just adding a layer of verification. We want to know who are these adults so that we can ensure that in those areas we do child enrollment so much faster. And given the fact that we are introducing Aadhaar-based, the Aadhaar-linked birth registration, so at the time of birth itself, we hope from next year that everyone will get. So I just wanted to clarify, otherwise there might be. And the other is, I think, which you very correctly mentioned, that we want to move from an application-based scheme development to an entitlement-based. And that the kind of work which a lot of states are doing and which you are planning to do would help. And apart from that, the only other point which I would like to just re-stress upon is that it is necessary that authentication is done of the Aadhaar number. Otherwise, as you were saying in your Sevarth portal, people are giving any random 12-digit number as an Aadhaar and it is getting accepted. So even if you go to our website, we have a facility. You can just type in those 12 digits and it will say whether it's a valid Aadhaar or it's not a valid Aadhaar. So it's not a random 12-digit number that has been given. But that authentication is one thing which I would strongly urge, that at least that should be introduced, either what like PM Kisan is doing, that once in a year they will do it, or with some periodicity. PDSO does it every time you withdraw your rations, the authentication is run. So that each scheme can work out what should be the periodicity, but it should not be that just because someone has given a paper copy of the Aadhaar, which might be photoshopped or given any 12-digit number, that should be accepted as an Aadhaar. Yeah. So once again, I just want to thank all of you that you spend time and would look forward to working with the state government as we move ahead. Thank you. Thank you, sir, for summing up this whole discussion and sharing gist of this workshop. As a customary, I would like to request Colonel Akshay Yadav, Director of UIDAI RO Mumbai, for vote of thanks. I'll not take much time. Lunch is around the corner. At the outset, from the UIDAI perspective, we'd like to thank the Honorable Deputy Chief Minister who took out time and attended the meeting today. We would also like to extend our warm thanks to the Principal Secretary IT and the entire team of Department of Directorate of Information Technology, including the consultant Yogini Rane, who's been working, I think, for the last 7 odd days to coordinate everything at the back end. Big thank you to the secretaries, principal secretaries who have attended the gathering today, and we request you to take forward the productive ideas that were discussed today. The directors, joint secretaries who attended, and the other officials from different departments, we would request you again that there are certain handouts we've shared with you. You can take them, refer them, and if you can take certain action points from there. From our perspective, I'd like to thank our CEO, Dr. Saurabh Garg, for taking out the time to come all the way from Delhi, Joint Secretary DBT, Shri Tiwari ji, for taking out the time to come from Delhi, and DDG Aadhaar usage. In fact, both the gentlemen have been here with us for the last 3 days. They've been to Silvassa, come back to Mumbai, and then they will fly out from here. From the perspective of presentations, I hope there are certain key action points that each one of us can work on collectively. Perspective of NPCI and aspect of Aadhaar usage, DBT transfers have been covered in detail. And last but not the least, I will cover the last part, the technical team which has supported us in the videography, the team which has kept the mics working without Murphy coming into play in between, and also the entire administrative support staff which was given the directions from the GAD, General Administration Department, to extend support in the Sayadri Government Guest House to facilitate the conduct of this workshop without any issues. At the end, I'll request you all, the lunch is ready, quite piping hot, and we can move for that, please. Thank you.